Very good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. I am audible. Am I audible? Yes, Mr. Kamal, you are audible. Oh, Mr. Barik here. Mr. Barik, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So thank you for here. Today we'll be able to listen from you also. Tutu Abu, good afternoon. Achanta, Mr. Tutu Sethi. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, good afternoon. Thank you. Our main speaker is yet to come because he is a little bit engaged with the foreign assignment. I'm just waiting for him. Before that, I'm planning to start that. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ଟିକେ ଏଠି ଇଏ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ वी कैन कीप द डाटाबेस एंड विल सेंड इट टू द मिनिस्ट्री ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଦୟା କରିକିନା କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରୁନୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ମିଟିଂସରେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିପାରିବୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ अपन ना कंपनी ना दे दे so that we can maintain a database and we can send it to the ministry. I will start the meeting. Good afternoon, friends. As you know that on behalf of Federation of Indian Export Organizations, MSME, DFO, DIC, and all DIC and OCF, I welcome all of you. It's a series of meetings for all districts. The Ministry of Commerce, Government of India has allotted 10 virtual meetings for 10 districts. 10 meetings for 10 districts. This is the 9th one, and another one is there, and 2 physical meetings they have allotted to us, and it is in Bhubaneswar and Cuttack. As a district, as a export hub, as you know that Government of India is more active on promotion of export, not only for the country, but also from the districts level, tier 1 cities, even also from the tier 2 cities. So they are basically focused for the districts to promote the exports because government knows that if you have a more exports to the if you have a more export to the other countries, the economy will be growth. And that is the reason that they are not only promote the promotion of export, not only from the city level, tier 1 cities, they are focusing also to the districts also. They have realized that they are coming with a lots of schemes like ODOP, one district, one products, GI products, MSME products, agri products with the district wise. They have prepared a list which is available in the websites. So they know the authentic foods are there, and some products is available in each and every districts. They have already identified, and they want to make it in such a way that it can be exported, it can be reached to the overseas buyers, so that the economy of the country, economy of the districts level will be increased. That is the reason that we all of us in a same platform. And today we are focusing for the Raigada. We are focusing for the Raigada districts, and they have identified the products like cotton and tamarind. With this, we have a speakers from the GMDIC, and a new speaker we have with us, Mr. Tutu Sethi, who is really looking after the cotton in the district of Kalahandi.
is the ground reality he has, and today he will be sharing his experience, the real time experience which is available in the ground level. He will be sharing his experience with us in any language, maybe in Odia, maybe in Hindi, maybe in Odia, and any language he can share his experience, and what is the use of that he maybe share with this. And also Tamarind, also from the Mr. Kaura from the Mr. Kaura from uh, Mr. Kaura from Magma Ports. They are doing the exports to the European countries, and tamarind plentifully available in our state, and how we can do the value addition on this. So that we can discuss on this. And also we have Mr. S.N. Paingrahi, who is a regular faculty. Who is talking about what are the formalities to start the export, what are the formalities with this. So he'll be talking about that. Dr. S.N. Naik, Assistant Director from MSME DFO, they will be talking about the schemes which is available in their ministry. And Mr. Rohit is there. He is talking about the do's and don't do's, because recently he has done some exports. What are the mistakes which are not to do? These are the things with him. He maybe share his experience. And Mr. Mahanti today, Mr. Mahanti from DPME, all these people are here to share their experience. But before that, I'll request Mr. Tutu Sethi to share his experience. He is the state coordinator for ASA, and hope that he will be sharing his experience on the cotton. What are the importance of cotton from our Odisha? Mr. Tutu, over to you. Any language you can use. Tutu, any language you can use. Over to you. Good afternoon to all of you. My Seti from Action for Social Advancement, Odisha. Is my voice audible to all of you? Yes, you are audible, Mr. Tutu. You are audible. Go ahead. Okay. Thank you, sir. So actually, just I want to brief about the cotton. Actually, you know, the Odisha is now growing in areas of cotton. Basically, the western part and southern part of the Odisha, particularly cotton crops, are slowly growing. You know, the cotton market is cotton market across the world is highly demandable product. So basically, the Indian cottons are getting more value to the world's actually fabrics industry. If you will talk about the cotton production in India, so particularly Gujarat is the highest producer. Secondly, Maharashtra, third is Andhra. Odisha stands around 7th and 8th position. ASA actually just came to the Odisha to work with the people, those particularly marginal kind of the section people. So we are working here with the marginal people in a institutional process. Why we are doing work here in institutional process? Because cotton is a purely commercial crop. They are not getting the actually their proper price. So what we are doing here, we are just aggregating the people to come around in a institution and produce the cotton. So basically, cotton, if we will talk about the cotton supply chain management, it starts from the ground to the fabric industry. In between, there are lots of players. They are actually entering into the system. If we will just build the capacity of the farmers, then they can actually bargain with the commercial people to get the better price. The cotton price actually depends upon the quality aspects. There are 2 to 3 parameters to measure the quality aspects of the cotton. One is the length. If we talk about the length, it varies from 29 to 31. So 29 cotton length is gives lowest price, 31 gives the highest price. Secondly, there is a micronair. Micronair, you know, in a cloth, if you will just see, there are some kind of the
very minutely thinned threads are there. The pore space called the micronair. If micronair is very less, then the price is very high. Third one is the quality aspects and the whiteness color. If the color is good, then you will get the good price. So basically, people in Odisha, those are the marginal. They having the upland, they are producing the cotton in rented situation. So they actually they don't have any kind of the idea how to actually first firstly how to cultivate the cotton. So they are using the highly intensive insecticides and pesticides. Those are detrimental to the environment. So we have to preserve our environment, people living organisms, particularly in living organisms means human, animal, and other uh, things. And second one is the cost effective. If you use the fertilizer and pesticides, the cost incurred will be more. So we are just training the people to preserve the environment. Secondly, to cultivate in proper way. Third one is the bargaining power. So ASA particularly working in three aspects here in Kalandi and Balangi to train them how to cultivate the cotton and get the more produce. Secondly, how to preserve the cotton. Generally, across the world, the people they are simply plucking the cottons and storing in the common place. If we will talk about the quality aspects, in any kind of the admixture to the cotton, means it affects the detrimental to the market price. So how to store the cotton, it is also a critical part. Third one is that there is any kind of admixture with the cotton. Admixture means, suppose if you are plucking, it should be in a clean and packaging, proper packaging kind of the thing. You should not pluck the cottons and store in a plastic bag or in a like a synthetic polythene. It should be kept in a proper cloth bag. So these are the three quality aspects actually ASA giving to the inputs to the farmers. If we talk about in general sense, in Odisha, generally people they are selling the cotton to the middlemen, and the middlemen they are purchasing the cotton and selling to the ginners. The ginners they processing it and selling to the buyers. So basically, the buyers are from the outsider. They are from the Bangladesh. They are from the other countries. They're buying the processed cottons and they're just taking into the fabric industries. Then from fabric industries to yarn factory. So the people those are in ground, those are producing the cottons. They don't know these are the means intermediaries. So we are forming a farmer institution called as a farmer producer organization. In that organization, they are procuring from the ground from their shareholders. They are aggregating in one place and supplying to the buyers. In this case, they are getting the premium price from the buyers. So these are the things actually ASA providing the support to the farmers. If we talk about the problems in Odisha about the cotton cultivation, one is the quality seed. Generally, quality seeds are not available to the farmers. Secondly, the rainfed farming. So generally, rainfed farming is very critical to the cotton crops.
When there will be the regular rainfall, then cotton production will be high. If there is some kind of erratic rainfall, then product production will be highly affected. Third one is the use of the pesticides without having any knowledge. What kind of pesticides or insecticides they have to use. So unnecessarily they are paying the high values to the shopkeepers. Fourth one is they don't know the quality aspects. So these are the core critical aspects farmers are facing in Odisha. Here in this case, we are promoting the organic practices. So organic practices like compost pit, vermicompost, then 5 leaves extract. They're basically the biological extracts, means using the different kind of the leaves. Then cow urine, then cow dung, chili gully paste. So these are the actually organic practices we are providing the training to the farmers to adopt it and apply in their crops, for which they can minimize their cost of cultivation. So here in Balangir and Kalahandi, we are supporting more than 12,000 farmers in different blocks to just enhance their income level and empowering their actually bargaining power, how to deal with the external markets. So this is all about our actually approach in Kalahandi and Balangir. If any other questions will arise, then we can discuss regarding the cotton supply chain management. Any questions for Mr. Mr. Sethi? Any questions? Mr. Sethi, how you send this to Bangladesh? Okay. Generally, sir, actually, there are many buyers. We are supplying to the like Superdry is one buyer, Inditex one is buyer. So there are number of external buyers are there. They are actually approaching to the people. Those are actually engaged with the cotton supply chain management system. So they are approaching. They are also giving us the quality parameters, on which parameters actually they have to buy from us. So in this case, actually, we have the corporate tie-up with them. Actually, ASA is the big organization. It works around 10 states, more than 2 lakhs cotton actually farmers. So we have the corporate tie-up. If a simple organization wants to work, then they can work. The buyers can approach them. They can send the sample. Then after getting the testing of the sample, they can buy it easily. But they have to stick to the quality parameters. It is very, very critical to stick to the quality parameters. Unless the price will be, market price will be highly affected. Achha, this the two names which you have taken. This the two name is a company or individual person from the Bangladesh, or they are from Indians, Indians based in India. They are the so actually Switzerland-based company. Achha, okay. Inditex, Superdry, they're from Switzerland. They have their actually unit in Bangladesh. Actually, in world maximum fabric industry now in Bangladesh. So Bangladesh is growing as a okay, got it. So you are it means that you are exporting directly to Bangladesh? We are directly actually exporting to the Bangladesh. Oh, achha, good. Any questions for Mr. Sethi?
So what is the price of the cotton that is being exported, and what is the kind of quality of cotton that is available in Odisha, and at what quantity usually the cotton is exported, and what is the profit margin in one container? If some kind of average can be shared, just to understand. Okay. Uh, First one, the quality aspects means I told there are 7 to 8 quality aspects is there. One is the length. Second is the moisture content. Third is the micronair. What I told means the spore space uh, amongst the cotton actually. If you just see cotton, you will find there are some spores are there. So this is called a micronair. Then fourth one the trash content. Then apart from there are other 3 to 4 parameters are there, but I don't remember these parameters. On that parameters, the price is actually fixed in market. Second one is the price actually, as it is a commercial crop and globally grown, so it depends on the market price. Every day market price actually varies. Suppose today's market price is per bale, per candy something 60 to 65,000 suppose. So in this range, market price varies from day to day. And margin, if you will talk about the margin, actually, I don't have any idea about the container, but I can say something per bale, per candy, you will get around something 5,000 rupees on an average. And so, what kind of quality is available in Odisha? Odisha is in India. If you talk about Odisha, the Odisha is the very good quality actually fibers we have. So generally, like staple length is 29 mm. In all Kalahandi and Balagi district, and the outcome percentage is good. 33 to 34% outcome is coming out. Coming. So usually an exporter who tends to take this product from Odisha, so is there any kind of a minimum quantity that this much pendi they take, or this much of bale order is minimum that is there? Like Actually, actually all sorts of the actually transaction is happening from broker. Okay. Directly coming to the ground to purchase. They have the brokers actually in different export zones like Kolkata, Mumbai, Visakhapatnam. So amongst them, actually, they have to just raise the quantity. Suppose you are actually processing it. So minimum in one truckload you have to supply something around 100 bales. So minimum 100 bales they can buy from broker. So since it is a commercial commodity, what are the for a new startup or for a new exporter, what are the challenges and threats, and how can they fight the new competition? How will they be able to match the people who are already in this trade for so many years and are exporting cotton? What will be your guidance to them? So in case of export, actually, I'm not directly involved, but from production to actually processing, I could give more idea how to actually do it. Okay, thank you. Can you please share your mobile number? Sir, can you please share your mobile number? Yes, sir.
in the chat box Yes, also sir. you Yes, can sir. share a I'm doing number. so. Mr. Sethi is working Yes, in the sir. ground level. Any question regarding the ground level, so that he can, regarding exports, because our other department is handling that. Because thank you, Mr. Sethi. There is no question for Mr. Sethi. I'm just waiting for. कोई सा भी ग्राउंड से लेकर फार्मर से मतलब फार्मर से लेकर प्रोसेसिंग तक मतलब मैं बता सकता हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट इट इज ए हाईली काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच इज No, no, no. organizational actually the many more people they involved. No, no need to hear that. Thank you, Mr. Sethi. Mr. Kaurav from. Thank you, sir. Thank you, So, sir. Thank you, this is Mr. Thank you, Mr. Sethi. Mr. Kaurav from Magma Foods is here. Mr. Kaurav from Magma Foods. If not, Mr. Mahanti, GMDIC. Yes, I'm there. Very much there. Oh, I'll thank you, speak sir. to my this mobile because we don't have a network here. I was trying to Okay. use my laptop, desktop, but it's not possible. Sir, you can go ahead with your products like tamarind, sir. And what can be this GMDIC can help? Really, what are the scheme with GMDIC for the export and district as export? As you know that, sir, because you speak so well. So people are just listening to you, sir. Thank you so much. And please speak little about the tamarind only, tamarind. And if you have other products, you can, in the permission of our participants, you can go ahead with that, sir. Over to you, sir. Over to you. Welcome. Good evening to all the participants. And this is my pleasure that Kamal Saab has said more about me, but I am much less than that. Anyhow, but I'll speak something, with the industrial policy as the background, 2022, which has been launched in Make in Odisha conclave in the last November, where we have, my voice is clear or not? Is my voice clear? Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah. Very clear, sir. Very clear. Yeah. Tamarind, it's a poor man's business. Here you can see huge trees all around places. There are places which is remote, even where your network cannot reach. There you can find lot of tamarind trees, and the tribals, that becomes their earning because they block the tamarind scaling up to the tree, and they get it back, and they don't have any other alternative. What to do it with the tamarind? Either they use it for their home, they use the produce for their home use, or they just pack it and sell it to some middleman. In the process, we have here Kalimala is a place where we have much of tamarind being collected as forest produce, and it is being packed into balls. Just take out the inner seed of it, and they take out the fiber over it. Then they pack it into, they put pressure on it that can be torn into shapes. Like it can be torn into a ball type, or it can be torn into a box, square, cube type. Like that, they sell it up to, the person who takes processing. And processing has a huge scope in tamarind. See, today people have become sugarless in their diet. So tamarind can, if you really process tamarind in a right way, that can be accepted by the people in place of sugar. Because it really helps the diet, it enhances the diets. Whatever food you take, you add slight tamarind to it, not spreading over it, but as a chutney or a achar. Then I think you can take in whatever food you can polish your plate. So tamarind processing can be with a slight addition of sugar and taking out the juice either by pressing or by other method where the process of solvent extraction can be used,
it will dissolve the juice, then you can evaporate the solvent and the juice will remain. That way tamarind can be processed and can be added some to increase its shelf life, and it can be packed in small pouches or into large bottles. So I cannot forget about the pichku, which has been marketed. I mean, I have had it in Bhubaneswar. So tasty. I mean, when you say that the product is tamarind, you cannot believe it in the first go. You have to really take it many times to say that it is tamarind. So processing has a real play on the product and the raw material, the way it is processed with some additives, and which is not against your, I mean, your health. On the health ground, it would not refuse you to take. Then the tamarind processing can be really of use to the society, and really it will fetch good amount of profit when the people are, I mean, in need of tamarind. I mean, if you have the tamarind as substitute for the achar, I think nothing like it. You can use it in your breakfast, you can use it in your lunch, you can use it in your dinner. And as I said, there is no sugar, so there is no headache. I mean, when the people have become all diabetic in the present world, I mean, 70%, I mean, in Odisha, it must be around nothing less than, say, a few millions who have become diabetic. Tamarind can be a food supplement, not a supplement. It can be, I mean, with the food, so that your food will get into the, I mean, your alimentary canal or digestive canal, and you can gobble up the food without having a second thought. And think of the child who will be given the tamarind as a sauce with the food. He or she can also take all the food without having a second objection, saying that no, I'll not take the food because there is nothing palatable or there is nothing tasty in the food. So tamarind can be one of the substance which can be really processed, and it has also an export market, because the number of Indians, they have increased in the US, and when you say that their number are going in US, and that too ODIs, I mean, they have not, I mean, left their home food, which they were taking as a child when they were born in Odisha or in India. So there are many foods which Odisha people take in US, and that is being ate by other Indians also in US. So export potential is huge for the tamarind. It has to be processed, and the processing has to be really taken into a higher level. There has to be some food laboratories where it can be really taken in a pilot project. I mean, there are some incubation center. I have never heard tamarind being used for incubating an incubation center to produce, I mean, to process the raw material to some better quality product, so that acceptability in the market can be much bigger. So, talking about my district, Malkangiri, we have a huge, I mean, tourist places which can be combed. I mean, if you have the hair tousled or it is uncombed, you look ugly. But if you comb your hair, if you wear a good dress, you look smart. Like that, here we have such grand canyons. We have waterfall like Niagara waterfall. We have, I mean, undulating lands with greeneries. If those can be combed, we can have certain sports like paragliding. We can have many other like, I mean, rafting, river rafting, and there are water bodies where we have to preserve the water to have hydropower from the water. Those can be used for water sports also. So, I mean, if we can bring in from outside our country, they will really love to be here. And in the present time, there is no fear of, the say the Maoist or whosoever. They have really receded from the very the current places or the places where the people are now dwelling, and they have gone into the borders. And further, there is a chances of their being extincted because of the border security force, which is also active in the district. I would say that tourism can be the next thing which if we can develop. And very recently,
I think by 2024, Malkanagiri is going to have the airstrip. Like that, already the airstrip in Jaipur has started, and from there, people are coming to Malkanagiri because it remains in between Malkanagiri and Koraput. And see, from Malkanagiri to Rayagada is around 7 kilometers, 7 hours journey. So, I mean, the airstrip in Jaipur has reduced the distance, and further, if the airstrips comes up in Rayagada also, it will really reduce the distance between the Bhubaneswar and the Rayagada. People will think of visiting every week to Rayagada and go back. Rayagada also has huge natural resources potential, and tamarind also is hugely available. And for processing, there has to be some entrepreneurship among the people who can really come and bring in all the tribals. We collect the tamarind and give it to the processing unit for processing. Besides, we have the Odisha food processing policy. We have the industrial policy resolution where the subsidy amount can go up till 2 to 3 crores. Say you just get a figure of 35%. 35% of the total project cost can be your subsidy amount. Think of the amount of subsidy that the government is giving in terms of crores from the money. It's a really big amount if you compare vis-a-vis the other states, other other states, and even places which are far up from the state of Odisha. So we can think of in that light that how our food processing policy, our industrial policy resolution is helping to attract entrepreneurs so that they can apply through single window clearance system, which is operated by the Go Ship, and they avail the subsidies as the attraction after setting up the unit. To say furthermore, in the Balkan district, we have many other products. See, I have shifted to my new office very recently on the 1st of February. Our all doors are no more wooden doors. Though we live in jungle, we cannot cut the woods. Even the person who has erected this building, the small lady, who is she's very much here in our office. She's also into additional repair, which I have ordered to them, and they have constructed all the doors and windows with the mild steel fabrication. We using metal by welding process. So the earlier in our childhood, the doors and windows we thought of to be made up of wood or say other fiber material. But here in Malkangiri, it is cheaper if you really construct the doors and window with the mild steel. And there is a mushrooming of the fabrication unit. There has been cases there is a fabrication unit which has just crop up like any wild tree. If there's a seed really sprinkled somewhere because of the pollination or something by the wind, it grows into a big tree after so many years. Like that, here there's a fabrication unit which has grown in an unauthorized place by the roadside. It is exporting the fabricated the gates, which is nicely designed. You can see in the YouTube searching for the Malkangiri, he exported to Middle East countries, and it is just by mere chance. This gentleman who has erected that unit, or who is operating that unit, doesn't have any knowledge of export. But people, when he uploaded his product in the YouTube, people from the Dubai, they saw it. Those designs were very much appealing. So immediately they tried to contact him through the YouTuber, and they placed many orders. And now he has become a multi-millionaire. Even he has taken a loan as PMHP loan from DIC. He doesn't care to be sad enough to say that I had also placed order for erecting a hoarding here in my new office, but he did not bother to also call back. Though many times my call with him, but he did not come to approach me to erect the hoarding. So he has become such a millionaire. So fabrication is one of the unit. It is not in Malkangiri only. It is also in Rayagada, where people are really establishing such fabrication unit, and that too also steel fabrication, which has become a current
fab. I mean, it's a fashion that people have switched over to steel furnitures. So through fabrication, steel fabrication, people have been started using steel furniture in place of the wooden furniture because of the banning of the wood and the costliness of the wood is also not available, and there is a lot of procedural requirement is required to take the wood and get the carpenter in the process. When the wood has not become available, the number of carpenters have reduced. I mean, they just work on the ply, but the ply is not that durable vis-a-vis the steel furniture which is being produced. In Koraput, I think last week I was connected through Kamal South to this webinar where I visited one of this furniture unit. It is a huge unit. I could not show it on the through my camera, but it's a huge unit. The gentleman who is a son of he's a DI, the inspector of education. She has his business is 25 crores turnover. Minimum profit would be around 2.5 crores in a month. I mean, 2.5 crores in a year. Think of it, doing it in Koraput, if it is doing it, I mean, with his perseverance. 3 of his brothers are into the same business, and they have been supplying. See, the Balkanagiri tribal schools, they took an order of around 3 crores from him. And there are many others also who is demanding product from him. So you can think of what is the market for it. Even if the government comes up and we have the procurement policy where the 25% of the manufactured product from the MSMEs can be placed for the government order, and the government has made such arrangement so to help the MSMEs to grow to a higher level in terms of their earning. So look at him, how he could he's able to deliver those products, he's able to earn those things, and with that he has also started designing the three-wheeler rickshaws and many other things like the solar sunlight poles. There are many other things to name that can be done through fabrication of the mild steel or stainless steel, which can be one of the kind of unit will be you can see in and around Malkangiri, in Rayagada, or in Koraput, etc. The third kind of product that has, as I said, it has a in-house. I mean, within the country, it has a lot of demand, and outside the country also, it has some export potential. That kind of product, which is, I mean, evidently available in the Swabhiman Anchal of Malkangiri, is called as millets, the mandia, which I think in my childhood I was taking mandia with slight sugar. I was really feeling, I mean, my belly was, I was feeling really cool. I mean, there was lightness in my body, there was lightness in my mind. I was able to think more than what I could take, what I could think if I were taking rice in place. And I mean, if you are growing paddy, you are getting 19 rupees a as a 19 rupees a kg as a procurement, or 23 rupees a kg, or 32 rupees a kg as a profit. But if you are going millet, your profit is manifold. And if you are value adding the millet, then sky is the limit. Because millet, this year 2023, the international year for the millet. And the Modi government and also the government of Odisha, the agriculture department has already celebrated the millet day, and they have floated the millet through millet mission. There are many millet kiosks which has been established where you can have the soups made out of millet. You can have the kheer made out of one of the millet called swan millet, and you can have many the cookies which have been baked from the millet. And in the last hockey match, I had gone to the Bhubaneswar and witnessed one of the matches. After coming out, I just went on the Oli club or Oli that which was decorated outside the stadium, and there was a millet mission stall operated by self-help group. They were selling the kakras, the arishas, the Odia pitas or Odia cakes. They were selling it. I mean, there was a huge sale. They filled up their product with a huge demand that they could not. I mean,
the more customer came, they went empty-handed without without being able to purchase the product. So millets processing can be one of the potential for the country, and it can be also expected outside the country. There are cases where millets are being used to manufacture your this thing, the pastas, the noodles, and that is really helping people. I mean, to take those food as a substitute, in place of maida or atta, which has high gluten content. Because as a diabetic person or person suffering from many other disease, I refuse the high gluten content food. So millet is really a food of the future, food of today, and it is also a food of tribals as of now. They are able to take millet every day. They can sustain their hunger for the days together. I mean, for a day, complete day with a simple, I mean, hardly any expenditure with it. So, I mean, the growing of the millet is also like just like a small sorisha, the mustard seed. They just strewn it on the field where there is a slightly, inclined place where there is no deposit of water. And then these don't require any water to really, they don't require any watering to grow the plant. It automatically grows in the inclined plane. So millets growing is also easy for our place like Malkangiri, even Rayagada. I mean, there are 21 districts I have been told they are growing millet, and they have many of the districts, advanced progressive district has already opened millet kiosks in their places through many of the self-help group. So that can be also one of the products. I said millet, tamarind, fabric. These are the products. Besides, we have groundnuts, we have teal. That is also being grown in Rayagada. I mean, we have a Rayagada, we have a food park where it is a total, you can set up any export-oriented unit in the food processing. And I mean, this is just a plug-and-play kind of process where you can get your thing registered, then you will be allotted a space with a common facility center, and you can start processing your product, whichever you desire to market within say a couple of days. I mean, within 15 fortnight or a month, so that really your product can reach market very quickly, so that you start making profit, start reaching to the people get to know, and in the process you will grow with the product as the time comes. With this, Kamal sir, I hand over to you, and you can go ahead with other speakers. Thank you, Mr. Mahanti. So nicely you have share all your experience and inputs regarding this tamarind and cotton, or other products also, millets also. As this year we are celebrating the millet year, because government is focusing of promotion of millets. They want to, the world should know the importance of millets, and with lots of value addition they are doing. And millet is a good potential products for the world. And thank you very much. Welcome. Though Mr. Panigrai is not here, so I'll just take a few. I'll just give my presentation, but it will be in Oriya. And if you have any doubts, so that, and then I request Mr. Barik to speak about the few pre-shipment or shipment documents little bit, so people can know. I'll just share my screen. Is it visible to you, everyone? Yes, visible. Yes. Thank you. जेहेतु आपण जानिथिबे जे सबल तो कहि आछी जे फिओ भलिया संस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया में सबल नुआ एक्सपोर्टर तयारी करबा ओडिसा पय नुहे सारा देश पय नुहे ओडिसा पय केमते हमें ओडिसा और देश पय नुआ एक्सपोर्टर तयारी करि परिबा सो दैट यदि फ्यूचर रे समान यदि एक्सपोर्ट करंती गवर्नमेंट कैन रियलाइज द फॉरेन करेंसी. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स commodity boards. There are 36 export promotion councils and commodity boards which is falling under the Ministry of Commerce, Government of India. Each and every offices the same mandate the government has given to promote, to create a new exporters for the country.
As you know that in Odisha, 4.5 crores population is in Odisha, but hardly 100, 150, 200 exporters with us, but they are running the economy of our Odisha. And if you're talking about the India has a 1 lakh or maybe 1 lakh something is exporters there, but their contribution to run the economy of our country, 150 crores population we have. All these people have a great contribution to the great contribution in foreign currency to the country to run the economy of our world. Last year, and this today we are focusing for the Raigad district for the cotton and tamarind. Already tamarind and cotton, Mr. Sethi and Mr. Mahathir have already spoken about that. I have just experienced few of them. And last year, as you know, that we have reached all the targets which is set by the Government of India. 420 billions we have exported. 1 billion is equal to 8,200 crores. It depends upon the dollar rate. Dollar rate jodi jete achi sete anusar kore. Same dekhantu apankar last year we have exported petroleum products one ek number re. Dutya number dekhantu cotton yarn. Apan cotton dekhantu the demand in the world. Even also sethi kohutile Sir, slide change karantu. We can say the first slide. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ହେଲା ମତେ କହିବେ କେତେବେଳେ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣି ପାରୁନି ମୋର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଲାଇଡ ଆଜ୍ଞା। ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ମୋର ସେପଟେ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ମତେ କୋଉ ଅଡିଓ ନହେଲେ ମତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ହେଲା କଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଅଛି ଜେମ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ଆଜି ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଟା କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷଟା ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୁଡ୍ସ ହେଲା କଫି ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗୁଡ ଯୋଉଟା କି 6ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଆମେ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ 21-22 ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ ୟୁଏସଏ ହଉଛି ଆମର ଅଲ ଟାଇମ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାର୍ଟନର ଟପ ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି ୟୁଏଇ ଯେହେତୁ ଆମର यूए हूँ आम सेकेंड पार्टनर आपंकर जिते गल्फ कंट्रीज गुड़ा अच्छे आम ये जेहेतु से इंडियंस मानकर बेसी इंडियंस मानकर बेसी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी इंडियंस माने बेसी रहती इंडियंस हेले आपंकर श्रीलंका हेले पाकिस्तानी हेले आपंकर सर slide चेंज करिए एबे एबे देखा हाउस तो ये कर ना सर ना हाँ देख अभी ठीक है हाँ ठीक है सर तेणु बर्तमान बांग्लादेशी समस्ते बर्तमान यूए रहती सब एमानकर जो कल्चर अच्छी एमानकर जो कल्चर अच्छी प्राय इंडिया सहित मैच करे नेपाली है ये प्राय समस्ते ये अच्छा आउ चाइना रहा बांग्लादेश हूँ फोर्थ आपंकर बिजनेस पार्टनर आपंकर ट्रेडिंग पार्टनर आमर बांग्लादेश रे गोटे गोटे बर्तमान गोटे प्रॉब्लम होची कोन ना दे डोंट हैव ए मैक्सिमम फॉरेन करेंसी लैंड विथ देम फॉरेन करेंसी तांक पाखरे बेसी नाही तेणु जो ऑर्डर सुडा जाउची जोटा फील करछन इंपोर्टेंट अच्छे से सेटा पेमेंट करछन अदरवाइज दे कीप फ्यू डॉलर्स विथ देम टू फॉर द इमरजेंसी ये जेमति आपण श्रीलंका रहला पाकिस्तान रहला जो देखुन डॉलर हां मु आपण कहय चाहूची जो व्हाई डॉलर इज इंपोर्टेंट फॉर अस काई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट इज सच ए बिजनेस विदाउट पेइंग ए सिंगल टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू कैन एंजॉय योर फॉरेन करेंसी विदाउट पेइंग ए सिंगल टैक्स रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत किछि इनसेंटिव्स आपनकर दिए जेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडर अछि ओटा कि हमर जदि पडियो हमर बारिका बाबू भी कहिबे तेणु तेणु बर्तमान जमी आम पाखे मैक्सिमम फॉरेन करेंसी जमी अधिका हो पार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब बड़े सरकार रहे माने प्रयास रहे आपंकर जे केमती आसीबो कारण चाइना जोटी आमे 400 बिलियन एक्सपोर्ट करला बेलू चाइना 2200 बिलियंस कर 7 टाइम्स मोर देन इंडिया हाएस्ट एक्सपोर्ट कर सारा वर्ल्ड रे 30% स्टेक वर्ल्ड अच्छे आमर मात्र 2% 3% आमर मात्र रोचे बट आम से चाहूँ इंक्रीज करने जोटा कि गुड साइन हो बट प्रॉब्लम हो जेहेतु माने जियो पॉलिटिक्स रे वर्ल्ड सिनारियो रे बर्तमान मार्केट डाउन अच्छी यूक्रेन वार चली कोविड जो सर यूक्रेन वार स्टार्ट हो गला तेणु चारिटे सप्लाई चेन टा टिके माने डिस्टर्ब होती आमर जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल जहाँ आम एक्सपेक्ट करूँ 800 बिलियन से टार्गेट थिला 400 बिलियन थिला कंप्लीट मोर देन 400 क्रोर्स हेला 800 बिलियन अच्छी जोटा कि टार्गेट करने बट न हेले भी बट विल बी क्रॉस 420 बिलियन ऊपर आम करी बोले आशा करूछु आउ ये आउ सेति पई गवर्नमेंट हां तापरे बर्तमान देखंतु आमे एथिरा अपन देखि परिबा आमे देखंतु 400 बिलियन एक्सपोर्ट करछु सेम टाइम आमे 600 बिलियन पाका पाकी इंपोर्ट करछु माने 200 ट्रेड डेफिसिट माने 200 गुणन 8200 कोटी टंकार आम पाखरे अमेरिकन डॉलर नाही चिंता करंतु आमे जदी घरे जदी आमे बिजनेस करूचे
कि जॉब करछे धर जो आमे 50,000 टंका आमे माने इनकम होची टिके खाली साउंड टे करिवे से साउंड के म्यूट कर देबे टिके जो माने एमती कहि भाबी परिबा जे आमे 50,000 आमे इनकम करछु जॉब रो हो किंबा बिजनेस रो करछु बट हम खर्च हो जे 1 लाख रुपीस जन चेष्टा करते एमती जदी आमे 5-6 मास जदी कंटिन्यू हला पर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इज कमिंग टू द बिजनेस ऑन आवर जॉब तो सेही भले भावंतु गोटे बड़ इकोनॉमी को रन करिया पहिले केते बड़ आमे खाली नॉर्मली कि ना के आमे ये करूछु माने आमे हमको किछि स्कार्सिटी जणा पड़नी बट गोटे बहुत बड़ सिस्टम गोटे गवर्नमेंट रो माने गोटे हम पछरे गोटे रन करूथा सेतिपई आम एक्सपोर्ट को सब बेले प्रायोरिटी दबा आज का डेट रे सब आम न्यू जनरेशन है आपंकर न्यू जनरेशन है कि न्यू जनरेशन माने जो माने आसुचंती दे शुड बी टेक लिटिल बिट इंटरेस्ट इन द आपंकर वर्ल्ड अपन वर्ल्ड सिनेरियो रे कोन होची कोन नै आपंकर एक्सटर्नल अफेयर ऊपर लिटिल बिट टेक इंटरेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर दैट कनो आज का डेट रे एमती वर्ल्ड गोटे टाइप रे हिगलानी जे गोटे गोटे पार्ट रे गोटे 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 पार्ट रे गोटे गोटे जदि आज का डेट रे धरे जदि यूक्रेन रे रशिया रे युद्ध होची बट हमर एटी ऑयल प्राइस बढ़ी गलानी कि आपनकर अलगा कंट्री ऑयल अपन रेट्स ऊपर आपनकर हैम्पर होची आपनकर आज चाइना रे कोविड हला आज इंपैक्ट होची आपनकर हमर जो एनी कंट्री रे एनी प्रॉब्लम हले इट इज स्ट्रेटली इट इज नॉट कमिंग टू द कंट्री इट इज कमिंग टू द होम हम निज घर पाखक हम पाखक पर्सनल लेवल रे आपनकर सब पळे आछि कोविड कथा चिंता करंतु कोड युद्ध हले अपन ऑयल प्राइसेस अपन देखंतु ऑयल रे सेठी शॉर्टेज हे गला अलगा कंट्री मान करे प्राइस हाइक हे जाउची सो इनडायरेक्टली हमको हैम्पर होची होची तो जो माने एक्सपोर्ट बिजनेस रोचंती से माने टिके जो सिनेरियो गुडा टिके इंटरेस्ट नियंतो सो दैट इट विल हेल्प इन द बिजनेस नेक्स्ट ला वर्ल्ड अपन जानी चंती जे 800 करोड़ पॉपुलेशन अच्छे अपन 800 कोटी ऊपर हमर वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया 150 कोटी पॉपुलेशन अच्छे बहुत जल्दी भी हमें वर्ल्ड नंबर 1 होगा जाउचे आ 220 देश 220 मोर देन 220 कंट्रीज इन द वर्ल्ड तेणु आम जो भी बिजनेस आम करूँ आम वाई विल बी गो फॉर द एक्सपोर्ट तेणु आम जब आम जहाँ भी आज का डेट बिजनेस करूँ भुवनेश्वर जब आम भुवनेश्वर ही करूँ पेरिफेरल बिजनेस करूँ वी आर जस्ट एक्सेस टू ए सिंगल मार्केट बट इफ यू गो फॉर एक्सपोर्ट it will be you can more than 200 countries you can access for your business so entire 200 countries is the buyer for buying country for you तेणु आपन को कौन करियो ना सेटा को टिके बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहे आपन आपण आपण गोटे मार्केट धरा जो आपन रशिया रे आपन फोकस करचोंती भाई यदि प्रॉब्लम ला यूक्रेन को पळे आसले कि जर्मन को पळे आसले सो ऑप्शन रहे आपन आप कंट्री चेंज करेंगे आप बिजनेस सिनेरियो चेंज करेंगे बट आप लोकल किसी बिजनेस कर भुवनेश्वर जब आप माने शॉर्ट माने बिजनेस न चलले तेणु आपको बहुत कष्ट हो जाए अलग कंट्री माने अलग गोटे बिजनेस स्टार्ट करने कि गोटे ये को जावाई बट एथरे कौन बहुत इजी एक्सेस हुए बट थिंग इज दैट सब फॉर्मेलिटीज विल हैव टू मेंटेन गोटे जिनस बाहर को पठा पहले जदि वर्ल्ड रे होची 100 ट्रिलियन रो मार्केट आपनकर अमेरिका होची 25 ट्रिलियन मार्केट गोटे ट्रिलियन होची अपन 1000 बिलियन ऑलरेडी कही गोटे बिलियन होची 8000 आज का डेट रे डॉलर रेट 82 टंका अच्छी 8200 कोटी टंका होची आपनकर डॉलर रेट आपनकर तेणु चिंता करंतु तेणु हम बर्तमान आप निजे न्यूज रे देखुथिबे जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करूची जे आपनकर 5 ट्रिलियन मार्केट आमे ऑलरेडी 3.2 अपन 3.3 रे ट्रिलियन रे अच्छु आमे और 1.5 ट्रिलियन हमको बढ़िया अछि हम इकोनॉमी को एक्सपांड करियर अछि सेति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग विथ लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे अछि बहुत प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स तयारी होछि रेलवे तयारी होछि कनेक्टिविटी करा होछि हमर नेक्स्ट मंथ आड़ को हमर दुबई सिंगापुर मालयसिया अपन उड़ा जहाज अपन एटू जीवो पुरी रे होछि हमर पुरी रे होछि आपनकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होछि सो दैट आपनकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बढ़ी जीव आपनकर एठू भी डायरेक्ट आपन एक्सपोर्ट करि परियो तेणु बहुत किछि सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होछि आपन टिके जस्ट मॉनिटरिंग करले कोन हम डायरेक्ट भी एठू जिंस पठै परिबा तेणु ये जो एक्सलेट करिया पई आको ए 5 ट्रिलियन मार्केट को एक्सेस करिया पई हमें तार किछि गोटे पार्ट होआ पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग विथ लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट आज एक्सपोर्ट हब जो आम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आज आम करूँ महांती सर अलरेडी कही सारे ओडीओपी गोटे प्रोजेक्ट अच्छी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से आपंकर 700 मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स
माने 700 डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी आपनकर इंडिया रे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स रे किछि यूनिकनेस अच्छी किछि प्रोडक्ट अच्छी जोटा कि आमे जानि पारुने सेटा रही कि नष्ट हो जाउची तेणु से सब जिनस कौन आम चेष्टा करूँ जे केमती आसो जमी आम चिंता कर धर जे भद्रक रे पालुओ लडू गोटे अच्छी भद्रक रे बट से आजिकल किए नौना करना ताकू से टाइप प्रोडक्ट है ब्रह्मपुर जमी आप बड़ी आचार पापड़ है समस्ते भल पाँच समस्ते सेमती किसी आम कराऊनी कि कौन एंटरप्रेन्योर भी आगू आसुना क्लस्टर मोड्रे कमी कोई प्रपोजाल आसुनी सरकार तो सब चेष्टा करने बट आम दायित्व होची आम समस्त अच्छे आम सरकार माने लोक मैंने आम डीआईसी है ये पछे टे जा पड़ो सहित टाइम देवा पड़ो नो डाउट सब बहुत जगह कंप्लेन आसे आमको किए हेल्प करना ये करना सेमती किसी ना तो आम सहित गोटे स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन करा पड़ो फॉलोअप करा पड़ो एमती ये कहवा आप इंटरेस्ट जेनेट करार अच्छे ना आम ये चाहूँ ये करने तेणु कले निश्चय आपंकर एमती किसी ना अन्य करें कहीं कर तेणु सरकार आसिले लोकल फॉर भोकल लोकल प्रोडक्ट्स को केमिति आमे निजे यूज करबा निजे जेमति यूज करबा सेटा को आमे बतन फोकस माने बेसी फोकस करा जाउची जेमति आमे लोकल फॉर वोकल हला वोकल टू माने ग्लोबल जेमति हमर ये दिया है जेमति आमे आमे कहबा जेमति आपनकर वियतनाम को जानतो वियतनाम रे कोन करछन ना से माने आपण इंपोर्टेड गारमेंट्स प्राय इंपोर्ट करते से कहते आमर जो प्रोडक्शन होची आमे सेटा ही पिंधिबा तेणु हैंडलूम प्रोडक्ट्स से डिमांड नहीं तो तेणु आमे तांकर कहया कथा आम देश में जोटा जिनस तैयारी आमे ताको यूज करबा हला आमर जो ये अछि तेणु सेमती से लोकल फॉर वोकल कहई प्लस आउ किछि जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अच्छी सेटा को केमती आमे बाहर देश को पठेई परिबा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोडक्ट सब ऑलरेडी ये कराई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रे एटा को आमे आमे एथरे ये कराई जेमती आपनकर ये बलांगीर कटन आ ये लास्ट प्रेजेंटेशन देते तेणु प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे किछि किछि प्रोडक्ट अच्छी जदि चाहिए आप तार साइड चेंज हो तो एटा साइड चेंज होची आपनकर नाइस सर होनी होनी ना होची होची सर होची ना होची एबे 9th स्लाइड रे अछि सर हौची हौची सर अपन 10th स्लाइड टिके देखिबे सर हां लोकल फॉर चेंज वोकल हौची होस तो हां 9th स्लाइड देखो अपन जदि 9th स्लाइड आपनकर ताको फोटो भी उठेई दी थांतु सो दैट केतला अपन बहुत दरकार पड़ीबाडा सब बलांगीर को जाइथिली तेणु बलांगीर पे ये हाईलाइट कर देइछे सब तेणु मत जो आगुरी आसुले जो 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तले जो लोक आसुले मो पाक माने बुझिया कौन सा प्रोडक्ट अच्छी जोटा एक्सपोर्ट करूँ प्राय 2003 रु 5 वर्ष 3 वर्ष पूर्व पर्यंत मत बहुत हेडाक थिला जे भाई कौन प्रोडक्ट अच्छी ओडिसा रे जोटा कि आमु तांको कहि परिबी जे माने तांको एक्सपोर्ट पई कहि परिबी सबले मु गोटे एग्जांपल दिए हैंडीक्राफ्ट्स करंतु कि हैंडलूम करंतु कारण आमे सेती जानितलु बट आज का डेट रे आमुक आउ किछि कहया पड़नी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच इज अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट वाइज व्हिच कैन बी एक्सपोर्टेड इन ए प्रॉपर पैकेजिंग रे प्रॉपर ताको वैल्यू एडिशन करिकना गोटे क्वालिटी मेंटेन करी आमे ताको वर्कआउट करि परिबा एटा होची 30 टा बाकी डिस्ट्रिक्ट रो 16 रु 30 टा डिस्ट्रिक्ट पई प्रोडक्ट अछि आपनकर सो दैट आपण एटा को देखि परिबे ये आ खास करी ये हमर माने फूड प्रोडक्ट्स ऊपर जोड़ा सब ये कराई छी सेतरे कोना टिके आजिकली सर्टिफिकेशन चार्जेस बहुत बढ़ी जाई छी बे आ फूड प्रोडक्ट्स जेतु आमे निजे नौचु सेतरे बहुत प्रकार सर्टिफिकेशन दरकार अपन दुबई पठेले हलाल सर्टिफिकेट दरकार सेंट्रल एफएसएसआई दरकार होची आपेडा रजिस्ट्रेशन दरकार होची विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट रो टिके दरकार होची सो जेते अपन रजिस्ट्रेशन करिवे सेते अपन हर्डल्स गुडा को क्रॉस करिवे अपन प्रोडक्ट पहुंची परिबो टिके खर्च करिया पड़िबो बट जेतले अपन वर्ल्ड मार्केट रे अपन जेते पहुंचीबे सब पैसा एकत्र आपनकर आदाय हेई परिबो ओडिसा कथा जदि चिंता करिबा ओडिसा कथा जदि आमे चिंता करिबा ओडिसा रे आपनकर प्राय 16-17 खंडे जीआई प्रोडक्ट्स अछि आपनकर आ जीआई प्रोडक्ट्स अछि जोटा कि आमे ताको भलो ये करिकना आमे बिक्री करि परिबा जीआई प्रोडक्ट्स जोटा अछि आपनकर जीआई प्रोडक्ट रे डिफरेंट कोन नॉर्मल प्रोडक्ट्स और जीआई प्रोडक्ट्स रे डिमांड कोन होछि माने ये रहे कोन डिफरेंशिएशन कोन रहे आपनकर ये नॉर्मल प्रोडक्ट को अपन तरह जो कोटपाट हैंडलूम गोटे हैला अपन साड़ी रे बिक्री कले अपन जदि ताको बाहर बिक्री कले हैंडलूम से नॉर्मल 5 टका हैला बट ताको जदि आमे जीआई टैग लगेबा आ तारो यूनिकनेस जदि आमे किछि कहि परिबा किबा आमे ताके बायर को जदि कन्विंस करि पारि जे जीआई प्रोडक्ट दिस इज द ओनली प्रोडक्ट व्हिच इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर एरिया नोवेयर इन द वर्ल्ड इज अवेलेबल दिस प्रोडक्ट इट इज ओनली गोटे एरिया होची तेणु आपण ताको गोटे भलो गोटे प्रीमियम प्राइस ताको आपण
ଆପଣ କୋଟ୍ କରିପାରିବେ ଇଏ କରିପାରିବେ नो डाउट जीआई प्रोडक्ट्स बिक्री କରିବାକୁ हेले हमको टिके दरकार हुए ऑथराइज यूजर गोटे सर्टिफिकेशन दरकार सो दैट आमे ताकू आमे बिक्री करिबे प्रत्येक जेते जेतेटा एसोसिएशन अछि जेतेटा प्रोडक्ट सेतेटा आपण ऑथराइज यूजर आपनको नबाक पड़ियो तांकर परमिशन नबाक पड़ियो सो दैट कोन ना आपण सब परमिशन सो दैट कोन आपण तांको प्रोडक्ट ताकू भलो रेट रे आपण बिक्री करि परिबे आपनकर इये रे एटा होची आपनकर प्रोडक्ट्स कि जोटा कि हमर ओडिसा रे माने ऑलरेडी ये अछि बलांगीर कथा देइछि कारण म चेंज करि परनी आपण हमें तो आज ये कथा चिंता करछि आज रायगड़ा चिंता करछि रायगड़ा रे ये आपनकर टामरिंड अछि प्लस आपण कॉटन अछि रायगड़ा पई हम जोटा आइडेंटिफाई करा हिछि प्रोडक्ट प्रत्येक जेंसर ये आपण सबले चिंता करिवे किंतु आपनकर प्रोडक्ट से ये हबो प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन जत्ते करिवे सेते भलो पाइबो ये करि परिबे जदि हमें सब आपनकर मार्केट रेडी हैला प्रोडक्ट रेडी हैला केमति एक्सपोर्ट करिया गेला आपनकर प्रोडक्ट फाइनल करिवे कंपनी गुटे करंतु इवन मिनिमम भी अपन प्राइवेट लिमिटेड नकले भी प्रोप्राइटरशिप की पार्टनरशिप रे भी अपन स्टार्ट करि परिबे आ कंपनी नाटे दियंतु लोगोटे दियंतु विजिटिंग कार्ड हैला विजिटिंग कार्ड सबटे फोटोटा मारिबे मो देखिए मो विजिटिंग कार्ड सबटे फोटोटे लागि थाए हां का लास्ट टाइम जेतल वियतनाम जाइत्रे कार्ड दरकार कार्ड रे अपन जानि परिबे जे को अपन किए बोली जानि कारण से माने गोटे बायर 15 कोटा लोक देखिथिबो त तार मन नथिबो जे ए लोक अछि फोटोटे लागिथिले कोन एटलीस्ट he can recognize that yes I met this person and we have talking regarding this product email hela letter pad hela ile karibe EIN आपनकर एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर जेमति एटा दरकार पड़े DIC सेटा को दिए आपन को सेटा अप्लाई करिया पड़े जेमति हम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करे गोटे टेम्पररी परमानेंट हुए से बेले आपन पैन नंबर ये करे सॉरी EIN नंबर तापरे उद्यमी रजिस्ट्रेशन टा करिया पड़े MSME DF रे MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME सेटा हैंडल करे तो आपन गोटे करे माने से ये करि परिबे रजिस्ट्रेशन अपन करिपरे पैन नंबर टा अपन प्रोप्राइटर थिले निज पैन पार्टनरशिप हेले कंपनी पार्टनरशिप करिपरे बैंक अकाउंट गोटे खोली परिबे आपनकर कमर्शियल बैंक रे आपनकर जोठी हां मन रखतांतु जेतबे भी आपनकर करेंट अकाउंट खोलिबे ताको पचारिबे एडी बैंक की नहीं ऑथराइज्ड डीलर बैंक की नहीं से माने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करचुंदी नाही से कोन अपन अकाउंट खोलिया चक्कर रे ताकर अकाउंट खोली देबे किंतु अपन बैंक थिबो आपनकर फॉरेन करेंसी बैंक ता थिबो अलगा आडे थिबो तण अपन 3-4टा बैंक देई आपनकर ट्रांजैक्शन हला कोन अपन कॉस्टिंग हला प्रॉब्लम हुए आपनकर ये रे सी आपन गोटे कथा पचारला को सी तांको पचारिबे करे तण अपन सब मन रखथिबे एडी कोड बैंक रे एडी कोड ऑथराइज्ड डीलर कोड माने अपन से फॉरेन करेंसी यूज करथिबे से बैंक से डील करथिबे तण ये आईसी कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आज का डेट डीजीएफटी रे आपनकर डीजीएफटी रे इंग्लैंड dgft.gov. जेमति आपन अप्लाई करथिले सेमति आपनकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर भी आपन अप्लाई करिवे आरसीएमसी जेमति हम कहले अपन 36 टा कम्युनिटी बोर्ड्स अछि आरसीएमसी एबे आ अलगा समस्त आ इशू परि कहउचंती बट सब आरसीएमसी आईसी आरसीएमसी सेम प्लेटफॉर्म एला डीजीएफटी रे ही आपन अप्लाई करिवे अप्लाई करिकना आपन नै परिबे आईसी आरसीएमसी एमिति भाबी परिया बहुत लोक आईसी धरी बसचंती लक्ष मोर देन लक्ष ऊपर प्रतिदिन प्रति वर्ष आईसी इशू होची इंडिया रो बट केते जण एक्सपोर्ट करचंती प्रति वर्ष मोर देन 1,50,000 आईसी होची बट ये आईसी माने आपन गोटे गाड़ी किनले आरसीएमसी माने आपन तेल पोसिला तेणु आईसी आरसीएमसी होची गोटे कोन आपन टू पार्ट्स ऑफ द कॉइन जो माने आईसी नैचंती तेणु आपन कंसर्न आपनकर एपीसी सहित जांतु जेमति आपनकर हैंडलूम कोन हैंडलूम एक्सपोर्टेशन काउंसिल जांतु हैंडीक्राफ्ट्स कले एचपीसी जांतु एबिन जदि आपनकर एग्रीकल्चर को आपेटा को जांतु जोट आपन जाउचंती बट फिओ का शेयर गोटे कारण कोन जे फिओ होची मल्टी प्रोडक्ट डील करे आम पाखर जो फिओ टू अवेल जदि आरसीएमसी कले अन्य आडे दरकार पडुनी बट समहाउ सब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अछि तेणु केतळ कस्टम्स कहूची आज पर तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दरकार नहीं खाली स्पाइस बोर्ड को छाड़ी देले बट किंतु कस्टम्स वाला कहउछ सब तो आरसी फिओ वाला नै गला अन्य मा केमति ऑफिस होवे नो डाउट तेणु आपण जेतु तांकटर भी आपण नियंतु प्योर भी नियंतु किबा तांकटर नियंतु बट हमर प्योर गोटे नेले कोन ना आपण जो ट्रैफिक रहिला कारण आपण तो जदि आज हैंडलूम एक्सपोर्ट करछु ता माने जे आपण 5 वर्ष कि 10 वर्ष हैंडलूम एक्सपोर्ट करिवे बट कोन होची ना हमर जो सर्विसेस उडा अछि आपण कंपेयर कर अलगा ईपीसी तो कंपेयर करले आपण निजे जानि परिबे जे हमें माने हमर सर्विसेस केमति प्योर सर्विसेस कोन होची पैन इंडिया रे हम कथा ओडिसा कथा हम कहूनी पैन इंडिया देखंतु ता साइट को जांतु केते फ्री जिंस दिया जाउची गोटे कि आपन को पैसा भी दवा पडुनी फ्री सेमिनार होची कारण कोन दिना नो लंच इज फ्री तेणु आपको देखो आपको जो दौरान गवर्नमेंट को दौरान से पैसा पुणी आउ थे रियूज होची आपको काम लाଗୁଛି जेंति आप गोटे बेटर आपको इकोनॉमी गोटे इंडिया इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेंगे ता माने जे आमे पैसा नहीं आमे पर्सनल होची यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको देखो आपको कहबी केतरा जिंस होची
तापर आप जीएसटी रेजिस्ट्रेशन आप करेंगे आजिकल जीएसटी न कले करेन्ट खोलू ना बट आप करूँ जीएसटी जो मैंने नौकरी प्लीज प्रति मसरे जीरो फाइल करूँ पूर्व ना प्रतिदिन 40 टका बोला बहुत कष्ट हुए बहुत एक्सपोर्टर आस मैंने कहते सर आम एत पैसा लगे भारी कष्ट हुए तेणु आई जीएसटी ने जदि कम न कर रखी दिंतु फ्रीज कर रखी दिंतु 5 मास 6 मास आप्लिकेसन देदेले जदि किसी करूना 6 मास रखिए तेणु आपको जीरो फाइल करा पड़ोनी फियोर वेबसाइट को मु प्लीज आप समस्त कह फियोर वेबसाइट को जातु राइट हैंड साइड देखो निर्यात मित्र आप्स अच्छी आप्स भितर थे देखो एत बढ़िया आप्स कर गोटे आप्स तैयारी करने एत कष्ट एत मैन पावर लगुच एत अपडेट होती आप निजे देखिले आप जानीपारे केते भीतर केते गोटे सिस्टम काम करुँची गोटे फिल्म 2 घंटार फिल्म देखुचे बट पछे केते लोक कंट्रीब्यूशन रोचे गोटे मीटिंग सेमिनार कर केते लोक कंट्रीब्यूशन रोचे फिल करूँ आप निर्यात मित्र देखो गोटे इंडियन ट्रेड पोर्टाल अच्छी इंडियन ट्रेड पोर्टाल तार अदर ऑप्शन इंडिया रे ही नहीं तो ये जो ट्रेड पोर्टाल आप देखो एथर आपंकर 100टा कंट्री रे आपंकर कौन रूल रेगुलेशन अच्छी एक्सपोर्ट करने कौन कौन फॉर्मेलिटीज अच्छी एटा चेंज हो तो सर चेंज होनी सर हो हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रे रही जाई ओ माय गॉड मते कहि दियंतु प्लीज मते कहि दियंतु आगे जानि पर मते मु जानि पर मोर चेंज होची मु सेते बड़ी बड़ी चलुची ओके आज्ञा सर हां आईसी कथा देखंतु मु ऑलरेडी एटा ऑलरेडी एक्सप्लेन करि सलेनी आईसी और आरसीएमसी ऊपर आईसी आरसीएमसी कहिची मते मैडम जदि न हेले मते प्लीज आप इमीडिएटली कहबे कारण मते मोर चेंज होची हला टेक्निकल डिफिकल्ट होची हला मते इमीडिएटली कहले सर आपनकर वेबसाइट देखंतु आपनकर निर्यात मित्र आपनकर निर्यात मित्र जे एप्स अछि प्लीज डाउनलोड करंतु बहुत मीटिंग वर्कशॉप सेमिनार इंटरैक्टिव सेशंस होची किछि पैसा पड़िबनी हां कोटा 200 100 टका 200 टका नौचंती जदि फील करचंती इंपोर्टेंट अछि जॉइन करंतु नहल नहीं आपण ये करंतु अलगा गुडा फ्री गुडा आपण करंतु बट मन रखिथांतु फ्री गुडा सब बेले फ्री गुडा ये नहीं जेतोला आपण जदि किछि पे करचंती तार कारण जेतु पैसा दोचंती सीरियसनेस ता आसे सब बेले इंडियन ट्रेड पोर्टल आप देखो इंडियन ट्रेड पोर्टल रे आपण आर ऑप्शन ही किछि नाही तो इंडिया रो आर सब्स्टिट्यूट ही नाही तो आपनकर 100टा कंट्री ऊपर अच्छी कंट्री रे आपण कोन एक्सपोर्ट करिए कोन इंपोर्ट हे परिबो आईटीसीएचएस कोड रे कोन इंसेंटिव्स ताकर डॉक्यूमेंटेशन कोन अछि कोन रूल रेगुलेशंस में अछि कोन सर्टिफिकेशन दरकार सब जिंस एते सुंदर माने एते सुंदर हबर से माने पूरा एंटायर सिस्टम लागुची आपनकर करछन आपण देखिले आपण फील करिया दरकार एटा को आपनकर केमिति एक्सपोर्ट करिवे कोन करिवे प्रतिदिन आपण यू फाइल एवरी डे गोटे सिस्टम एते माने लक्ष लक्ष टका खर्च होची खाली आपनकर आकु बनिया पई आपनकर आपनकर ए जो देखन थरे जांतो आपनकर एठी गले ही आपण जानि परिबे जे एक्चुअली रियली कोन अछि ओए तो मु भी भलारे भितरे एते मु ये नाही जेति जाईची किंतु आपण ये माने जेहेतु मते तो दरकार नहीं मु तो ये करछि बट आपण जो बिजनेस करछ प्लीज थरे विजिट करंतु एको बहुत इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपण पाइबे किछि ये दरकार नहीं गोटे एबे होती ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स गोटे पोर्टल तैयारी कराई जेहेतु कोविड टाइम रे कोविड कंटेनर प्रॉब्लम है कंटेनर प्रॉब्लम कंटेनर मिललानी बहुत रेट्स है ये है लोक बहुत ये कले देखो फ्यू वाले फ्यू आपंकर दी अज ईज ऑफ लॉजिस्टिक करछि गोटे साइड रे लाइनर माने सी एजेंट्स माने रजिस्टर्ड होती गोटे साइड रे एक्सपोर्टर इंपोर्टर होती आपन किछि रिक्वायरमेंट रहिले आपन फ्लो करंतु ऑल ओवर इंडिया हबो आपनकर यू विल गेट आमे कोन आमे आम पाखु जो माने हेले भी आम पाखु जो माने आसंती आम माने जो माने पचारु था लॉजिस्टिक कमेले आमे हमर दिगर अछंती हम लाइन अछि ताको ना दे दोछि न लाउ का ना दे दोछु हला बट एथरे कोन हो ना आपण 5 10 टा 20 टा ऑप्शंस पाइबे आपण कॉम्पिटिटिव रेट्स आपण जानि पारि जे को रेट रे हम देई पारि करबो किंतु मन रखिथांतु कोनसी लॉजिस्टिक कंपनी जदि चूज करूचंती सबले तार बैकग्राउंड टेस्ट करन बैकग्राउंड टेस्ट धर जो जने धर जो कमोडिटी धर जो आपनकर आयरनर पठौची ताकू गोटे सी गोटे बिजनेस पाइबा कहला कि हाँ मुझे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पठेबे से आप आयरनर वाला कहले हाँ सर मुझे दे करदेवी किंतु एग्रीकल्चर जो फॉर्मेलिटीज गुड़ा कस्टमर्स अच्छी सी जानी प्रॉब्लम तो से स्टार्ट है सी पचार ये कर तो ये आप जाना पूर्व आप एग्रीकल्चर कर आगे कर एनक्वारी करूँ कारण सी एजेंट्स मानकर कारण बैड माने आपंकर से माने समस्त तो बिजनेस दरकार ये दरकार तेणु सब कौन आप बैकग्राउंड टेस्ट करूँ ये कहूँ आउ सेटा को आपण गोटे फोकस करबी तांकर तेणु एटा गोटे कोन आपण गोटे ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे करिछि आ ए जो वेबसाइट वाला जेहेतु कोविड टाइम रे हेइतला ऑल ओवर इंडिया रे एक्सपोर्टर्स मान को सुविधा पय करा हेइतला एतर जदि किछि प्रॉब्लम होछि ना किछि एजेंडा सर्विसेज आसुनी कोन होछि आपण तांकर कांटेक्ट्स अछि ताको मेल कले कोन से जानि परि जे प्रॉब्लम होछि ताको सॉर्ट आउट करिवे सो दैट योर फीडबैक विल बी हेल्प टू अदर एक्सपोर्टर्स तेणु यही परिबो सो दैट बेस लागिवनी गोटे देखो
बर्तमान जेहेतु डिस्ट्रिक्ट आज एक्सपोर्ट हब है कि ना आपंकर ओडीओपी है कि आपंकर जीआई प्रोडक्ट्स है प्रमोट करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम फिओ तरफ आम निजे ग्लोबल लिंकर सहित टाइअप अच्छी से ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंट अच्छी सहित टाइअप कर पोर्टाल तैयारी करछुं अमेजन है फ्लिपकार्ट भाया जो एक्सपोर्ट थ्रू ई कमर्स करेंगे तार यूजर नेम पासवर्ड आम जो मैंने रजिस्टर्ड अच्छा यूजर नेम पासवर्ड थ्रू रे भी करेंगे किसी चार्जेस बहुत कम रहे नॉर्मल तो चार्जेस नॉर्मल तो एंट्री तो करेंगे बट किंतु चार्जेस तार किसी रहे जोटा कि जो मैंने फिओ रजिस्टर्ड अच्छा से यूजर नेम पासवर्ड दे पशिले टिके रेट फेट टिके कम रहे बोली जहाँ ये अच्छी यदि किसी फर्दर किसी जब एथेर भी किसी जेहेतु नुआ नुआ साइट गुड़ा फीडबैक दरकार पड़े ऑलरेडी तो फ्लो करुच्ची बट किसी किसी प्रॉब्लम जब आसूची आमको जड़ेले कौन आम से डिपार्टमेंट को पठेबू ना डायरेक्ट भी पठेबे जे एटा मते प्रॉब्लम फेस करछि एटा होची अछि कोविड परे आपनकर प्रोसेस फूड्स रा माने बहुत डिमांड बढ़ी जाइछि ह्यूज डिमांड बढ़ी जाइछि वर्ल्ड रे बिकॉज वी आर गोइंग टू द फूड फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बर्तमान देखो खाइबार केते कष्ट चारिआडे देखो आप श्रीलंका कथा देखो देखो निजे देखो तो बहुत कष्ट लगुच कारण आम दी दिन गोटे दिन गोटे ओली खाया ना आम केते कौन करुचे चिंता करूँ आप इंडिया रोचु आम इंडिया रोचु केबे खाइबार प्रॉब्लम केबे आप फील करना 150 कोटी लोक आम घर में 4टा लोक को आम मैनेज कर ठीक से खाया ये कर माने एटा एक्सपेक्टेशन लेवल अधिक देखो केते बड़ कंट्री रे चिंता करूँ 150 कोटी लोक को फीडिंग करवा सो टफ केते वेस्ट कर 1 लाख कोटी पाखापाखि फूड वेस्टेज होची मूसा खाईदेला ये करदेला ये बट बर्तमान गवर्नमेंट मैंडेट जे वी विल बी फिट टू द वर्ल्ड आम सारा पृथ्वी को आम खाइबा को दबा ये करवा माने कुटुंब बसंते से G20 सेटा को ये करा होची आम सब ये करिया चाइना पर चाइना चाइना थिला चाइना वाज द फूड फैक्ट्री टू द वर्ल्ड थिला एबे हम ताकुटो आनी कि आम करछु तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत फोकस करा होची निजे भी आप देखिथिबे करते जेहेतु गोटे बड़ कंट्रीटा एत सब जिनटा बड़ सांगे तो हुए मन भी मिसिया दरकार ये दरकार बट आप मन रखिए बहुत बड़ अपॉर्चुनिटीज अच्छी एग्रीकल्चर सेक्टर हो गोटे आम ये करिपरिबा यूरोप रे आम पठेले बहुत स्ट्रिंजिंग रूल रेगुलेशन जोटा कि G20 रे प्राइम मिनिस्टर थरे कहिथिले G20 लास्ट G20 रे कहिथिले एथर भी रिक्वेस्ट करिवे जे तुम जो नियम कानून जो अच्छी यू रजिस्ट्रेशन जो अच्छे टिके कोहल कले कोना हम जिनसटा जाई परिए सेथरे भी हम लोक टिके केतर बदमाशी कर दोचंती फूड खराब हो गेले एबे इंजेक्शन जेमती साउथ अफ्रीका खराब हो गेला सारा वर्ल्ड रे बैन हो गेला सेटा प्रॉब्लम होची एई सोच आमे जेमती जेतल भी आमे कोनसी जिंस हम एक्सपोर्टर माने जो माने अच्छी जेतल जिंस पठेबे टिके प्लीज खाइबा जिंस जोटा बॉडी भीतर को जाउची जोटा बॉडी भीतर जहाँ भी आम जिन पठेबा चेष्टा करें क्वालिटी जिनटा पठेबा नॉल नाई टिके मार्जिन आम पठेले कौन आम यू ऑल पीपुल्स आर एक्सपोर्टर आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री आपण माने आम ब्रांड एम्बेसडर आम कंट्री तेणु आम जब खराब जिन टिके पठेदेबा जब चाइना अंडा आसला केते गाली कर चाइना वाला ये कर ठीक से आमको किए गाली न करू ये करू इंडियंस आम इंडियन वी आर आम बर्तमान जाऊँ विश्व गुरु होगा जाऊँ सारा इंडिया बर्तमान होगा जाऊँ तेणु आमको से मेंटेन से आम से जो मोमेंटम टाक रखा पड़ो आम से जिनटा को मोमेंट करा आम सब लोग ये करूँ कारण मुझे भी देश जाइए बहुत शुणी ये लास्ट वियतनाम रे मोर बैड एक्सपीरियंस माने हला जे गोटे आम गोटे इंटरप्रेटर नहीं गोटे झीटे नहीं तेणु आम आम नहीं बहुत माने बहुत आड़े गलु तेणु 3-4 दिन जेहतु रहा मुझे माने गोटे सिस्टर हिसाब से फ्रेंड हिसाब से कहली सी इज वेरी जूनियर टू मी कहला व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया मुझे एथु करी कहीदेली इंडिया इंटरस्टेट फेयर आसापी कहले ओ नो 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 इंडिया इज ए वेरी डेंजरियस कंट्री मत ये कथा से कहूँ 5 दिन पर मो सहित मिसला मो आटीट्यूड जानी सारा तेणु आमर से जो इमेजटा अच्छे ये अच्छे वी नीड टू बी कारण जो मैंने जानी वी नीड टू बी चेंज से समय आ जाए लोक मानले सारा वर्ल्ड आमको देखुची इंडिया कौन कौन स्टेटमेंट होची तेणु आर फायदाटा आर कमर्शियल आम के फायदा नहीं पारिबा सेटा आज डेट मैंडेट होची आम के भरपूर फायदा नहीं आम इमेज जो बर्तमान प्राइम मिनिस्टर तैयारी कर इंडिया तैयारी कर सारा वर्ल्ड रे से तार केमती आम कमर्शियली केमती नहीं पारिबा आम वर्कआउट करवा जदि आम चिंता करवा फूड प्रोसेसिंग मात्र 2% ରୁ 3% भितर आमर फूड वेस्टेज टा बहुत हुए आमर चाउल है ये है बहुत फूड वेस्टेज बहुत हुए फूड्स है आम वैल्यू एडिशन करूना बट अमेरिका रे कौन ना 80% मोर देन 80% फ्रांस 70% 80% आप जिते आसला वैल्यू एडिशन करते धर जो ऑरेंज है ऑरेंज रु से आम कौन ऑरेंज डायरेक्ट पठे दूसरी बट से वैल्यू एडिशन कर ऑरेंज पल्प है ऑरेंज आउ कि ड्राई ऑरेंज जहाँ भी आप अच्छी माने वैल्यू एडिशन कर जिते वैल्यू एडिशन कर अधिक पैसा आप बिक्री करें टामरिन कथा आम टामरिन कथा चिंता करूँ टामरिन देखो आम आजिका डेट स्वीट टामरिन भी आप देखिए मिल आपंकर कौटी रिलायंस आप देखिए स्वीट टामरिन बाहर आसो है तेणु स्वीट टामरिन डिमांड आप निजे देखिए टामरिन पेस्ट है टामरिन सब जो
चूरन है ये है आटा डिमांड हो टामरिन पेस्ट महांती जो कहला टामरिन जो पेस्ट कराऊँ ये कराऊँ एटा भी आम देखो ये जो 24 मंत्रार प्रोडक्ट्स भी आप देखिए स्विट्जरलैंड भी मिलूँ स्विट्जरलैंड रे आप ये तार शॉपिंग मॉल रे पाउची टामरिन जूस है ये जिते रॉ मटेरियल्स मिलूँ जिते टेक्नोलोजी नहीं किना कहे सर टेक्नोलोजी आणबू कौटू टेक्नोलोजी आने पे सब कही आसी CFTRI अच्छी CFTRI मैसूर ताकू जिनस रेडी होगा ताकू आपंकर 6 मास 9 मास सब कही आसी 6 मास ताकू रखिए प्लस ताकू के पैकेजिंग करेंगे पैकेजिंग सब कही IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग सब सरकारी संस्था को प्राइवेट संस्था को आम रेकमेंड करूनु सरकारी संस्था टिके जीवे आप पूरी भोग नहीं पहुँचे निश्चय आप काम हम काम के अटकबनी आज मुझे न पारे 5टा लोक अच्छे कम करने आप ये करूँ सब सब भल ब्रांड आपंकर देखो ये आपंकर 24 मंत्रा है एपटे है आपंकर मदर्स है आपंकर प्रिया है आपंकर समस्ते समस्ते आपंकर बर्तमान समस्ते बर्तमान ये लाइन रे आपंकर देखो से देखुं जदि आम से सिंपल कथा जदि कहबा आचार कथा कहबा आप विश्वास करेंगे गणेश ब्रांड है कि प्रिया है 800 रु 700 800 कोटी टका खाली आचार एक्सपोर्ट कर दौरान फॉरेन कंट्री को जस्ट इमेजिन एत बड़ मार्केट आपंकर सारा वर्ल्ड आम तो गोटे दिकोटी होगले भी आम पूरा लाइव मर्सिडीज धरी पकेबा तेणु आप चिंता करूँ टामारिन रे बेसी प्लेयर्स ना जहाँ टामारिन आस चॉकलेट्स है ये है आपंकर ताकू जो वैल्यू एडिशन करा आपंकर जमती आमर ओडिशा रे भी आम टामारिन बाहर को जाऊँ आपंकर टामारिन पेस्ट है ये है ये करें चेंज हो तो सर टिके ये पैकिंग पे को कहले सर पैकिंग पैकिंग पे को कहथिले कहू सर पैकिंग पे हमर अछि IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जोडे कलकत्ता ऑफिस अछि IIP पानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग CFTI रो फुल फॉर्म को कहले सर सेंटर फॉर फूड प्रोसेसिंग CFT सेंटर फॉर फूड ट्रेनिंग है CFTI रे मार देले गूगल मार देले आसीबो ट्रेनिंग ठीक ठीक मैसूर है ना सेंट्रल सेंट्रल फोटो देखि देबे ये रे आपन को टेक्नोलॉजी देबे के CFTI रे देबे पैकेजिंग टेक्नोलॉजी देबे IIP दीटा को आपन ये करंतु बाकी जो रजिस्ट्रेशन जहाँ करिया कथा आपन करिवे ये रे तेणु आपन कोन ना आपन इमली आपन इमली चॉकलेट है आपन देखो इमली रे आपन इमली चॉकलेट है कि टामिकॉन गोटे है आपन टामारिन पेस्ट बहुत डिमांड इतपाई हुए आपन कौन कहले आपन आम जान आपंकर जानते जिते गल्फ कंट्रीज गुड़ा अच्छी से आपंकर इंडियंस मैंने रहती बेसी इंडियंस भितर कौ मैंने बेसी रहती आप साउथ इंडियंस मैंने साउथ इंडियन मैंने जब रोचे संबर खाइबे संबर जदि आसे संबर जब तैयारी हे जमी आप तेंतुड़ी सी तो तेंतुड़ी छड़ेकिना करेंगे आजिकल कौन कहे पेस्ट पकई दूसरी टिकना पकई दूसरी सो दैट यू गेट ए रियल टेस्ट ऑफ द संबर तेणु आप देखु अर्बन प्लाटर है मदर्स है प्रिया वाला है ये वाला समस्ते सार पशिगले पशिले तथापि से किसी जब आम भैल्यू एडिशन कर इमली टेस्ट है कि ना आपणकर कैंडी है आपणकर ये सब जी आप देखुं आर आप जूसेस है टामरिन जूस है आपणकर टामरिन गोटे जिनस किए मना करते रादर आपणकर माने यू लव टू हैव दिस ऑलरेडी महादेव कही सारे आपणकर जूसेस है ये ताकू जब आप किसी वैल्यू एडिशन करेंगे जदि आपणकर आ सहित जदि किसी वैल्यू एडिशन करेंगे टामारिन विथ आपणकर डेट्स जो खजूरी कोली सहित जोटा कि आमकर डेट सहित जदि किसी ये करेंगे आहरी किसी आप नुआ नुआ वैल्यू एडिशन करके ये करेंगे जमी टामारिन डेट्स ये देखो मदर्स अच्छी टामारिन डेट्स चटनी आपणकर है चटनी तेणु जिते नुआ नुआ आइडियास ने कि ये नहीं सब खाइबा जिन गुड़ा नहीं पारे से हाँ ये हम आप देखो टामरिन आप देखुए जो आइसक्रीम जो ये लगुच ये केते डिमांड कहला आपंकर टामरिन देखो टामरिन चॉकलेट्स गुड़ा देखो केते अलग अपेक्षा तो निश्चय भल लगे टी तो टामरिन आपंकर जिते वैल्यू एडिशन आप करेंगे सो दैट यू गेट ए गुड रे आप रट बिक्री अपेक्षा आप चेष्टा करेंगे एटा जब आम भल पैकेजिंग करी आप देखते पैकेजिंग देखते आप केमती है ये पैकेजिंग कर ये करेंगे अच्छा सब कही आपको पैकेजिंग उपर सब देखो आपंकर से मिक्सचर आप देखो मिक्सचरटा के फास्ट पैकेजिंग स्लाइड चेंज हो तो मैडम हो अच्छा तेणु पैकेजिंग अच्छा ओके ओके
तेणु देखो पैकेजिंग रे देखंतु केमती आपण फर्स्ट पैकेजिंग देखो सेकंड टिके वैल्यू एडिशन करचंती थर्ड टा देखंतु थर्ड वाला टिके वैल्यू एडिशन करचंती फोर्थ वाला टिके करचंती फिफ्थ वाला बहुत भलो करचंती तेणु आपण जत्ते प्रोडक्ट भितर कोन अछि गॉड नोच प्रोडक्ट भितर कोन अछि से मालिक जानथिबो से पैकर्स जानथिबो भगवान जानथिबो आउ के जानि परिबे नै कंज्यूमर तो बिल्कुल नै तेणु आपण जदि क्वालिटी मेंटेन करिवे तो ऊपर जदि भलो पैकेजिंग जदि करले भलो ये देखा गला ताले आपनको डेफिनेटली आपण सेटा बिक्री हबो रसगोल्ला ऊपर आपनकर देखंतु रसगोल्ला ऊपर आपण देखंतु केंदी पैकेजिंग तार केते भलो भलो पैकेजिंग आपनकर ये जेतु हमर रसगोल्ला टा में जीआई का येटा हितला सेति पई जीआई प्रोडक्ट रसगोल्ला भी बहुत डिमांड आपनकर फॉरेन कंट्री रे आपनकर फॉरेन कंट्री बहुत ह्यूज डिमांड आपन फॉरेन कंट्री रे रसगोल्ला देई पारनु कारण हल्दीराम रे बड़ मार्केट अछि आपनकर जेतु हमर 6 मास 9 मास स्टोरेज माने ये ही परनी से टेक्नोलॉजी ता पाई परनांती एबी जंदी इंटरेस्ट भी दउनांती करनांती तणु हम जाई परनी बट रसगोल्ला आसे ट्रिमेंडियस मार्केट आपनकर जोटा कि आपण ये करि परिबे जीआई फाइल हेतला आपनकर आउ जाम जो टामरेंट जीआई फाइल हेतला आउ हमर रत्नाकर राउत जाइतले अछते फोटोटा मो फोटोटा भी रखिनी दुखर कथा आउ फोटोटा रही पारलानी जेतु फोटो उठाउथिली आउ कॉटन ऊपर हम जदि हैंडलूम कथा हम चिंता करिबा कॉटन हैंडलूम कथा जदि हम चिंता करिबा कॉटन तो वन ऑफ द बेस्ट कॉटन व्हिच इज अवेलेबल इन आवर स्टेट हला जोटा हम स्टेट रे ही आपण भलो कॉटन ऑलरेडी से माने कहि सारलेनी आ कॉटन ऊपर मु बेसी कहूनी जस्ट खाली किछि किछि अछि जे बट मु आ ताको आ बेसी आ ये करूनी कारण बहुत समय नै जिवो कॉटन उटे माने आपनकर हैंडलूम सॉरी हैंडलूम रो ये डिमांड होई छी कॉटन रो साड़ी कॉटन आको कॉटन साड़ी ऊपर किछि ये करूनी स्ट्रेट आपन जाउची डिजिटल मार्केटिंग ऊपर जाउची आपनकर डिजिटल मार्केटिंग सब प्रोडक्ट रेडी हेगला फॉर्मेलिटीज रेडी हेगला सब जिंस हैला मार्केटिंग केमती सब आज का डेट रे सब बड़ चैलेंजेस होची जे मार्केटिंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग केमती करबा दी प्रकार मार्केट गोटे ऑनलाइन मार्केटिंग करि पारे गोटे फिजिकल मार्केटिंग करि पारबा आज का डेट रे देखियो चालू छी ना नहीं देखिबा नहीं छाड़ू आज का डेट रे आमे जदि मार्केटिंग करिबा बायर्स पाइबा कि हम सब बड़ चैलेंज होची जे केमती आपण बायर्स पाई परिबा ये जो मानकर टिके फाइनेंशियली टिके भलो अछि जो मानकर टिके भलो अछि से माने फिजिकल आपण इंटरनेशनल ट्रेड फेयर उडा हम फिओ तरफ जाउची अलगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी पठौचंती एमएसएमई डिपार्टमेंट भी पठौची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई समस्त पठौचंती किछि किछि पठौचंती आमे भी 5टा फॉरेन टूर आमे दउची प्रति वर्ष दउचू जो रजिस्टर्ड ये अछंती जदि आपन प्रोडक्ट लाइन रेडी हे गला ताकू आपन जदि फॉरेन टूर आपन जदि फॉरेन कंट्री ट्रेड फेयर जदि भाग नेबे ये करबे सो दैट कोन आपन डायरेक्ट आपन फॉरेन बायर्स मान साथ इंटरेक्शन ले कोन आपन ऑर्डर्स ता पाइबाटा बहुत इजी हे जाय प्लस आपन किछि वैल्यू एडिशन भी बहुत हे जाय आ किछि नॉलेज भी थाए किछि इन्वेस्टर्स भी आपन पाई परिबे बहुत किछि हुए किंतु बट कथा हो जे कोन आम प्रोडक्टटा आम पाखे कौन प्रोडक्ट अच्छी आम पाक जीवार अच्छी से आम पाक के आसबेनि बहुत कष्ट हुए आसा बहुत कष्ट हुए जब आम अपेक्षा करवा आम बहुत समय वेस्ट हो तेणु आम बेटर जे आम राइट मार्केट पाक पहुंचार अच्छी आमि पहुंची पार जो थे आम भाग नहीं पार धर मो पाखे फूड प्रोडक्ट्स अच्छी फूड प्रोडक्ट्स आपंकर फॉरेन कंट्री अच्छी आपंकर गल्फ फूड फेयर जोटा हवाक जाऊँगी आपंकर ये रोचे फ्रांस आपंकर रोचे जहाँ भी आपंकर ये रोचे जदि कहे ना मुझे फॉरेन कंट्री जाई परिबिनी मु रिवर बायोसेलर मीट रे भाग नेबी फूड प्रोडक्ट ऊपर कहूँ फूड खाइबा जिनस फूड प्रोसेसिंग ऊपर जदि कहूँ जदि इंडिया भीतर मु पार्टिसिपेट करया चाहूँ आमर बेस्ट होची आपनकर आमर हुए आपनकर एठी आहार गुटे हुए आहार 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 AHAR आहार गुटे हुए अपन ट्रेड फेयर लास्ट टाइम बोले कलकत्ता हेतला प्रति वर्ष हुए गोटे सिटी रे हुए अपन मेट्रो सिटी रे हुए प्लीज चाहतो अपन सेठी की गोटे हुए अन्नपूर्णा फूड फेयर जो बॉम्बे रे हुए सेप्टेम्बर मास रे आपनकर बॉम्बे रे हुए अन्नपूर्णा फूड फेयर एग्री फूड हुए आपनकर अगस्त मास रे हुए बांग्लादेश रे हुए सॉरी बैंगलोर रे हुए आपनकर ये हुए तापर आपनकर इंडस फूड हुए दिल्ली रे हुए आपनकर वर्ल्ड फूड जोटा मुझे पार्टिसिपेट करी गवर्नमेंट तरफ कर वर्ल्ड फूड थे तो होता सेकेंड टाइम कोविड पर होनी तेणु ये सब जगह कौन यहाँ हूँ रिवर्स बायर्स सेलर मीट जोटि कि बायर्स मैंने आप आसती टू शोकेस देयर प्रोडक्ट ऑल्सो फ्यू बायर्स इज कमिंग टू गेट द से भी चाहती किसी प्रोडक्ट जब नुआ किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट सोडा से भी नहीं भी आप ये करेंगे तो डुआल वे आप पाइपर
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯଦି ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ରିଭର ବାୟୋସେଲରେ ମିଟ୍ କରିପାରିବିନି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ତାର ବେଷ୍ଟ ୱେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଆମାଜନ ହେଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ବି ଫିଓ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକିନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଏ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ସ ଗୁଡା ଅପଲୋଡେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ସେଟା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ସେଟା କହିବି ଆଗ ପଛରେ କହିବି ଯଦି କିଛି डिजिटल मार्केटिंग जदि आप हेल्प नेबे जदि एसईओ हैला कि नले आपनकर ऑनलाइन फेसबुक हैला कि आपनकर ये ट्विटर हैला कि नले इंस्टाग्राम रे हैला जदि आपन बिजनेस रो बहुत किछि बिजनेस भी कन्वर्ट भी होउची त आपन जदि मार्केटिंग प्रॉपर्ली करि परिबे सो दैट आपन जो प्रोडक्ट अछि जो प्रोडक्ट हेटा भी एक्सपोर्ट थ्रू इंडियन फॉरेन पोस्ट ऑफिस जोटा कि हमरो एठी मंचेश्वर हेछि आपनकर फॉरेन पोस्ट ऑफिस थ्रू रे भी आपन पठै परिबे जदि आपन किछि मूवमेंट जदि करिया चाहन बट किंतु मन रखिथांतु जेते जहा कहले भी आपन जदि बाहर को जदि थरे भलो ट्रेड फेयर जदि आपन जाई परिबे आ दि तीन एक्स्ट्रा रहिकरा जदि आपन मार्केट रो जदि मार्केटिंग करि परिबे ताले हमें जिते भी आप केतल जीवे कारण आम जो डेलीगेशन पठौ जंती बांग्लादेश आम जाइथिलु लास्ट टाइम पठैथिलु मु ताको पूरा ब्रीफिंग क्लास देलु आगुर भी आम कोन दिन गले भी सेठी गले केमती कथाता हेबे कोन नेकना जीवे केमती मार्केटिंग करे सब हमर पर्सनल एक्सपीरियंस गुडा आम ताको शेयर करू इवन भी ताको कहि भाई तमे जदि फॉरेन टूर करछु मग छोट मग धरी जीवो एते कथा भी को मग छोट मग धरी जीवे से कहबो सर मग नै कोन करिवु ए करिवु मु तो जाओ जाओ प्लीज जाओ तुम देखो तो कहबोनी आसला सर पूरा बंचे देले सर हमको कोन कारण आम जानिछु कारण आम कारण सेठी इंडियन पैंट तो नथिबो सब माने आपनकर कमोड पैंट थिबो तो से तो नथिबो तो हमर अभ्यास नै तो छोट छोट जिंसोडा को आमे ताको जोटा आमे मु निजे पर्सनल माने जोटा फेस करछि मु चाहे अन्य माने अननेसेसरी प्रॉब्लम में पड़ो तो आम छोट छोट जिन पासपोर्ट कोड रखिए कौन करेंगे केन कथा करेंगे ये नहीं तेणु जीवा पूर्व कौन प्रिपरेशन हे सेठी कौन प्रिपरेशन हे ड्रेस कोड कौन रहा आसला कौन कौन आमर जो एक्सपीरियंस अच्छी जोटा को आम शेयर करूँ जोटा कि तो आउ तांको भी आमे कहू एक्सपीरियंस शेयर करू इवन भी से माने गला पर भी से तो प्रॉब्लम फेस करू से जो प्रॉब्लम फेस कर आम सहित शेयर कले आमे भी से जिनटा को अन्य मानक शेयर करू तेणु आमे आमे भी किछि से माने आम ठार भी किछि एक्सपीरियंस किछि पांती प्लस आमे भी तांको ठार शिखू एमिति नै आमे सब किछि जानिछु तांको ठार भी शेयर करू तेणु आपन जेतल भी जा होछि टिके आपन शेयर करजु सब गोटे काम कर चेंज हैला चेंज होस तो आगे सर हाँ सब मन रखिए आप प्रडक्ट सब ब्रांड ऊपर फोकस करेंगे सब गोटे ब्रांड कारण गोटे जमी आप गोटे आईफोन नेला सब आम जो पैसा अच्छी आम से आईफोन कथा कहे सैमसंग कथा सब ब्रांड और फोकस करूँ आप प्रडक्ट गोटे ब्रांड आप जिते आप देखेबे जो दिखता है बिकता है मैंने देखो जो जिन भी देखो जिते एडवर्टाइज करेंगे जिते लोक देखिए कौन भल जिन कौन ता भर अच्छे भगवान जानती बट आम मन भर आसी जाए माने से जिनटा भल थी जमी आप आडिडास है कि पेप्सी है कि डिस्नी है हार्ले डेविडसन है ये ये सब गोटे गोटे ब्रांड से किसी न कहले लोक जीवे जमी ये जीवे डिजिटल मार्केटिंग तो आपंकर ऑलरेडी कहीदे आप एथरे कौन ना फेसबुक है ये ट्विटर है जी सब सोशल ये अच्छी आप प्लीज आपको आप निजर माने आप पर्सनल प्रोफाइल न जिते न बना मना कराऊनी बट कंपनी प्रोफाइल गोटे अपलोड करातु आउ से माने आपनकर प्रोडक्ट आपनकर दियंतु गोटे छोट छोट वीडियोस गुड़ा छाड़ता देखिए एडवर्टाइज फेसबुक एडवर्टाइज आज माने थर गाड़ी आसीगला से उड़ा उड़ी करी ये करी माने केमती एडवर्टाइज करछंती बट सेही टाइप रो आपनकर जो टाइप रो आपनकर जोटा वेबिंग बा आपनकर जेतोल फेसबुक रे देबे आपन जेतोल हम देखुछन प्रोडक्ट फोटो देला बेलू साइड रे कुटा थिबो न का साड़ी सुखी थिबो का चप्पल देखा जाउथिबो तो एई सब जिंसटा टिके अवॉइड कर कारण से फोटोटा सारा वर्ल्ड देखुची बायर देखुची हैला तेणु आपनकर प्रॉपर जगार प्रॉपर कोड आप देखो फोटोग्राफी करूँ ये करूँ है तार ये इंस्टाग्राम है आपंकर यूट्यूब रे छोट छोट वीडियोस करूँ आप शाढ़ी तैयारी कर शाढ़ी भी तार तैयारी कर वीडियोस देखु सहित जो नेशनल अवार्ड जदि अच्छी सहित टिके इंटरव्यूटे नियंतु कि नियंतु कहतु हिंदी कि इंग्लीश कह कि हिंदी इंग्लीश जदि न कौच ओडिया कहले भी आप थे इंग्लीश तार दिंतु ये करने है तेणु छोट जे कौन कहूँ सी ये फोटो फुनिया हेल्प नहीं पारे एसईओ तो नहीं पारे नो डाउट टिके खर्च पड़ुची ये पड़ुची बट बेपार करिया हेले आपन टिके लिंक्डइन होची बेस्ट प्लेटफॉर्म टू
ये कारण लिंक्डइन रे बहुत एजुकेटेड बहुत हाई फाई लोक बड़ बड़ लोक प्रोफाइल लोक मान रहंती फेसबुक रे सब समते तो आजिकल ये हिलानी बट फेसबुक रे कले भी आपण ऑर्डर्स भी हो इंटरनेट तो प्राय इंडिया रे प्राय तो 100 कोटी पाखापाखि लोक तो यूज कर मे बी 100 करोड़ यूज कर ऑनलाइन शॉपिंग रे कोविड पर ऑनलाइन शॉपिंग ता बहुत बढ़ी जाइए फिजिकल शॉपिंग ता बहुत कमी जाइए तेणु आपको आखि आगे ऑनलाइन ऊपर फोकस करंतु कारण ऑनलाइन गोटे प्रोडक्ट जब आपण ये करछंती दौरान इट विल बी सी सारा वर्ल्ड अपन प्रोडक्ट देखुची हाँ जेतल भी आपनकर जेतल भी आपनकर जेतल अपलोड करूचंती माने धर जो कौन कहते हाँ जेतल आपनकर फेसबुक रे हो कि इंस्टाग्राम जदि सॉरी आपनकर ये हला ईबे हला कि नले अमेज़न रे जदि किछि प्रोडक्ट ये करचंती जदि आपन गोटे अमेरिका कि नले आपनकर यूरोप को जदि आपन सॉरी आपनकर ऑस्ट्रेलिया को जदि आपनकर से मार्केट को आपन जदि टारगेट करूचंती ये करचंती ताले आपन जो प्रोडक्ट अछि आपन नॉर्मली कोन करे हम एक्सपोर्टर्स में जो माने एंटरप्रेन्योर अछि कोन करे प्रोडक्ट कोन हमर माने इंडियन अमेज़न रे पुट कर दोचंती ए कहबा आज्ञा एक्सपोर्ट किछि हेलानी नाही आपन प्रोडक्ट को आपन को ऑस्ट्रेलिया रे जोटा अछि अमेज़न डॉट जेंति आईएन एठी अछि अमेज़न डॉट एयू गोटे थिबो सेठी आपन को जदि अमेज़न प्रेजेंट थिबो जदि कारण अमेज़न त भी यूरोप रे पसिला हेबे कारण नॉर्मली यूरोप कंट्रीज रे कोन हुए ना आपन दिस पीपल्स लव टू बाय फिजिकली चले चाहती फिजिकली से करते ऑनलाइन ऊपर डिपेंड करते बट कोविड टीच देम टू डू इट इन ऑनलाइन तेणु बर्तमान से बर्तमान से आप जो सॉफ्टवेयर तैयारी कर जो ऑनलाइन फॉनलाइन ये वेबसाइट गुड़ा कर भल डिमांड हम ये तेणु बर्तमान यूरोप रे बर्तमान स्विट्जरलैंड है बर्तमान ये सब बर्तमान खोल मैंने ऑनलाइन बेसी खोलुची ये हूँ तो तार फायदा नहीं पारे तो सेठी आप करेंगे ऑनलाइन आजिका डेट रे चेंज हो आपंकर चेंज हो आज्ञा सर हाँ तेणु बर्तमान कौन आपंकर देखु प्रसादी आप बिक्री होची आपंकर आप देखु कैटल डंग गोबर भी आप बिक्री होची काउ डंग भी बिक्री होची माने गोबर जो ये बिक्री होची कौन खसी घसी घसी बिक्री होची आपंकर पुणी देखु देखते बढ़िया 38% ऑफ भी दौरान ये दौरान 38% ऑफ 75 रुपीज तेणु देखो मार्केट को टाइप पैनिट्रेट कर देखो पैकेज अमेजन पैकिंग करके बिक्री कर दौरान तेणु देखो मार्केट केते आम पाखे एत जो आपंकर घसी बिक्री है एत ये बिक्री दांतकाठी बिक्री है कहीं आम बिक्री करें आम एत बढ़िया प्रोडक्ट अच्छे आम कहीं जापरिनी तेणु खटिया भी देखो बिक्री कर खटिया भी बिक्री कर दौरान तेणु ईच एंड एवरीथिंग इज सेलेबल बट वी हैव टू फाइंड द राइट बायर राइट मार्केट राइट बायर फॉर अस सेटा आम सब आइडेंटिफाई करार अच्छी सब आम कोर्मिन फेयर बहुत माने पठेचु माने ओडिशा रो स्टेट गवर्नमेंट तरफ रो फिओ तरफ आम फर्स्ट कोर्मिन फेयर आम गवर्नमेंट लेवल गोटे पठेलु 2009-10 बोधे पठेलु देखो एम सब जाइए भल पाई माने भल रेस्पॉन्स भी पाई अलरेडी आम किसी पार्टिसिपेंट भी अच्छे से भी जाइए भल रेस्पॉन्स पाई आम प्रॉपर भी भी कहूँ जे तुम एमती केमती कौन कर ट्रेनिंग भी दौचु ये कर ट्रेनिंग तो नुहे बट आम आम पर्सनल एक्सपीरियंस आम शेयर करूँ जो भी गले भी आप टाइप देखो गर्ल फुड जोटे आपंकर करेंगे जीवा पूर्व आप मार्केट जा पूर्व आप सब ये करेंगे बहुत आम अच्छा एंटरप्रेन्योर आम कथा शुणिकना भी करुँच माने ये करुँच माने आम जहाँ एक्सपीरियंस शेयर करूँ फॉलो भी कर खुशी लगुच कि मानु ना से कष्ट लगुच तेणु आम जहाँ भी आम जहाँ भी शिखुचु आप शिखुचु आम तो बिजनेस करूनी करें आपण कहते एक्सपीरियंस शेयर करूँ नुआ कि जानले भी आम कहले कौन ना आम आम अलग आड़ को भी आम अलग मान को भी शेयर कर कारण आम तो सब जगह प्रेजेंट रही पारनु आम तो ये करूँ तेणु ये भी कर एथरे आपंकर देखु नड़िया भी देखु नड़िया भी आम जड़े पठे आपंकर ये भी आपंकर फुड पठेले एठी भी पठे ना सब बॉम्बे ही पठे आते बायर्स मैंने आम इंटराक्शन रखुचे आप जेम्स एंड ज्वेलरी पठाऊे से मैडम सार भी पठाऊे तेणु आम कर भी आप बायर मान सहित कथबार्ता है गोटे देखते फोटो जो उठे नॉट फॉर टू ये आम जाइलु देखा करूँ ना ये फोटो गोटे देखार गोटे कारण हूँ जो आप बायर मान सहित कथबार्ता हे प्लीज सहित गोटे फोटो शेयर करूँ कारण कहीं फोटो दरकार हुए कहीं जो भी आपको जो सेकेंड जो आप प्लेटफॉर्म फेरी आसवे जो करेस्पंडेंस करेंगे तो शह शह लोक मेल करेंगे तेणु आम तो सब लेट आम तो लेट कला मेल रेस्पॉन्स करते बहुत लोग आसती जे सार मेल रेस्पॉन्स करनी तेणु आप फोटोटे पठेदेले है
आउ ये रखिए कौन कहले आपण जो मेल जो पठाउछंती कि व्हाट्सएप नंबर थियो जदी व्हाट्सएप नंबर पठेबे ये करिवे कि जदी व्हाट्सएप ता पाखु पठाउछंती सो दैट फॉर द टाइम बिंग से न देखला पर्यंत आपण प्रोफाइल आपण फोटोटा रखि दियंतु कि ये कर दियंतु जोटा हम देखा हितला सो दैट कोना से माने ताको इजी होबो जे आपण चिनिया पई कारण तो से तो बहुत लोग देखा करते आमे तो 5टा लोग कि 10टा लोग देखला का नाम मन पड़ेनी सेम वे आल्सो दे अबाउट से माने तेणु यहाँ ये हूँ गोटे ओमान जो जाइलु ओमान देखु तो टाइम हेनी बेस ये करहबनी बुझे हेनी आम जो फॉरेन टूर गुड़ा जो जाऊँगी पुणा अच्छी एटा सॉरी एटा आम जो लास्ट टाइम जो जाइलु लास्ट टाइम आम जो बांग्लादेश पठेलु आम 2 जन पार्टिसिपेंट जाते ओडी ट्राइब रू जाते प्लस ओडी ट्राइब जाते प्लस आप 89 बोली जने जाते 89 आम बांग्लादेश पठेलु बहुत भल माने रेस्पॉन्स पाइले आम ओडी ट्राइब जेहेतु बांग्लादेश इज नॉट फॉर द माने बहुत कॉस्टली जिनस नुहे से माने टिके लो ये रे बट से माने अल्प से रेस्पॉन्स जोटा 89 माने बहुत माने साइन करचंती बहुत कुछ ऑर्डर्स पाइचंती तांकर स्पोर्ट्स ये जो स्पोर्ट्स जिनस गुड़ा सब माने स्पोर्ट्स रो जो ये गुड़ा कार्पेट हला ये ला टाइप तेणु ये सब जिनस गुड़ा हमें ये होचु दिस इज माय लास्ट फोटो सब देखा कारण भल लगे कारण एटा ही इज नॉट द रियल मैन ही इज ए कार्डबोर्ड मैन आ देखंतु से ब्रांडिंग एमती करचंती एटा होची गोटे आपनकर गोटे जिंजर बियर आई हैव टेकन ऑन दैट ये ब्यूटीफुल वन हला नेइथिले तेणु मु सेम कोट आई हैव वेयर टुडे आल्सो आ देखो फ्लैग भी इंडियन फ्लैग लगे नॉर्मली तो मु अलग फ्लैग गुड़ा लगाए रशिया ये लगाए बट जेहेतु मु रिप्रेजेंट करथली तेणु ये करथली दीज आर द स्मॉल थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स लर्न फ्रॉम आवर अदर पीपल्स आल्सो सब लर्निंग प्रोसेस तो सब रहे बट आम सब शेयर करवा सब जिन शेयर कले कौन हम ना आम आमर अपडेट हो सब ये तेणु दीज आर द थिंग्स ये आउ फर्दर जदि किसी क्वेश्चन अच्छी सो दैट आम डिस्कशन करिबा इट्स ओपन हाउस नॉट ए ये तेणु इट्स ए ओपन हाउस तेणु आम समस्त डिस्कशन करिपरिबा आशा करे जे माने टिके ये लगी तो हाँ सर कौन सर बहुत लोग कमी गले बहुत देर ना हाँ समस्त वीडियो सर टिके टिके कमिनांती अछंती सर अच्छा ये टिके समझ वीडियो ऑन कर देले सो दैट वीडियो ऑन कर देले कोन हो ना हमें टिके फोटोटा नै जवा गोटे फोटो नै जवा समते टिके वीडियो ऑन कर दियंतु समते फॉर द गोटे मिनिट पई तापर लुचि गले चलियो देवस्मिता मैडम भल लागला केबे देखि नथि बोधे प्रेजेंटेशन आज्ञा किसी सुन किसी जाना पड़ला हाँ ठीक है समस्ते मनोरंजन बारिक बाबू प्लीज टिके ऑन कर दियंतु जगदीश चंद्र समस्ते टिके ऑन कर दियंतु सो दैट कोना हमें टिके फोटोटा ये करबा रेवेका मैडम भी अछंती कि जी गुड गुड मैडम गुड आफ्टरनून नमस्कार अनिल अनिल बाबू टिके ऑन कर दियंतु टिके एटलीस्ट गोटे फोटो भलो फोटोटा नै परिबा ओ पात्र बाबू अछंती ओ दी पीपल्स आर हियर टुडे जगदीश बाबू टे प्लीज ऑन कर दिले सो दैट कोन ना हमें ये करबा ओ एपडी भी अछंती अच्छा दीप सागर साहू अच्छा नुआ नुआ भी हाँ बहुत नुआ ओके थैंक यू सर मु नुआ नुहा नाई आपण पूरा घर लोक होइलनी आ आउ किछि क्वेश्चन अछि नहले हम बारिकम पाखु जिबा से टिके कहबे प्री मु तो रजिस्ट्रेशन स्टेजटा कहि देली प्री शिपमेंट आ कहबा जदि किछि कहि परे तापर हमर दिगंबर भी अछंती कैलकुलेटर अछंती सी भी लॉजिस्टिक वाला सर फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस किछि अछि एक्सपोर्ट ऊपर देखो तो बैंक रो तो के तो नाहंती मु डाकिनी बट किंतु फाइनेंस रे कोन होछि ना होछि प्री शिपमेंट फाइनेंस हमें जा कहूछ हमें बट किंतु एक्चुअली रियली मिलुनी अपन 100% कोलैटरल देले से मान देबे बैंक वाला खाली कहउछंती दउ नांती बट आमे माने प्राइवेट जदि आपनकर भलो जदि एक्सपोर्ट नुआ एक्सपोर्टर तो मिलिबनी कंफर्म हो जानतो हला आ बाकी रहिला आपनकर जो माने रहिले जो माने धर गोटे की दुटा शिपमेंट करछन अपन डीप फाइनेंस गोटे अछि डीप कैपिटल गोटे अछि जोटा कि हमर सहित फिओ सहित भी टाई अप अछि अपन तांके से डायरेक्ट कथा त हेले भी सो दैट कोन ना से माने प्राय 80 70 80% माने फाइनेंस करते very क्विकली करछंती बट से माने टिके रेकॉर्ड ट्रैक देखुछंती प्रॉब्लम होछि कोन ना जो माने लोन फोन नै जाउछंती ये करछंती टिके न सुजिला कोन से माने टिके डाउट करछन समस्त को बैंक इज फॉर अस बैंक तो हम मान को पई अछि बट किंतु कथा होछि जे से माने सेते टिके ये करनाती
माने लोन फोन गुडा ये करना से देखुचंदी तार माने ताकू जेमती रिस्क न हो सेति पई समान टिके ये करछन देखुचंदी आमे बड़ कंपनी को दे देले आमे टिके सेफर साइड रहइबो काई ये करिवो आ बड़ कंपनी बैंक फाइनेंशियल बैंक बड़ बड़ फाइनेंशियल बड़ 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 कंपनी तो कोन करथिन आपन तो जानिथिबे आ मु कोन करियो हैला बैंक फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस देती तो हमको जेमती कॉस्टिंग एनालिसिस किछि सर हाँ कस्टिंग टा आपन हमरो ये भी कहि देबे कि कहले कस्टिंग एनालिसिस टा भी हमर मेन कथा हला कोन हमर लॉजिस्टिक खर्चटा होची मेन रखा जाय बाकी जहा खर्च हला सेतरे आपन कस्टिंग टा 30-40% रखिबे बट डिपेंड्स अपन तो जेमती आपनकर प्रोडक्ट टा कोन अछि आमे जदा जो मोबाइल फोन टा आमे ताको अधिक आमे देखो मोबाइल देखो आमे दुकान को गले भी धर जो से 50 टका जदी अधिक बिक्री कर देले भी आपन संगे मोबाइल देखि दोचन केते पैसा नाही ऑनलाइन रे तो 24 टका अछि आपन केते 25 टका कहउचंती और 24,500 दे दियो तेणु सेटा जदि मूर्ति उपर आम जमी मनोज अच्छी मूर्ति उपर है सी प्राइस टा बढ़े पार कारण जेहेतु से मूर्तिर किसी आपंकर मूर्ति पठेला 5,000 को 5 लाख करदे भी नहीं जीवे जदि से काउंसलिंग कर कारण मूर्तिर किसी रेट फिक्स किसी ना तो डिपेंड्स कर नॉर्मली 30-40% मार्जिन रहे बाकी जो मैंने इंटरनेशनल मार्केट कौन ओपन हो गलाना तेणु आप 5-10% रखिले मैंने बहुत कि वॉल्यूम रे गेम टा हुए आप 30% रखले कौन आप मार्जिन करना 10% आसले भी आप माने ये कर पारिबे डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट लॉजिस्टिक खर्चटा बैंक खर्च सब खर्च मिसे देबे आप सर नमस्कार कमल सर नमस्कार नमस्कार सर सर रायगड़ा रे एडी डीलर बैंक अच्छी कि सर सेटा टिके सर आपन चेक करिया पड़ियो ऑथराइज्ड डीलर बैंक मु तो जहा इंक्वायरी करि सर जी पटे कोड अछि सर साउथ रे कोड अछि माने जयपुर की रायगड़ा की नहीं नहीं आपन रायगड़ा थिबो कारण जेतु रायगड़ा मध्ये ओते से जो ये अछि ना फैक्ट्री गुडा भी अछि ना आपन से जो ये इमामी ना कोन अछि ना नहीं एडी बैंक सर माने कहि पारु नांती नाही भी बोधे बैंक गले भी से माने जो रिप्लाई दोचंती इमेज हाँ ना ना सेटा ठीक कथा एक्चुअली कोन फॉरेन ट्रांजैक्शन टा बेसी होन ना तेनु से माने एठी भी बैंक गुडा भी प्राय रिप्लाई टा ठीक से देई परना कारण आमे भी सेटा तम कमेंट्स करूनु बट थिंक इज दैट से माने कर एते फॉरेन ट्रांजैक्शन टा नाही तो आमे आमे जेमती आमे आमे एते भाबी पारे बुझी परिबा आपण देखंतु कुआडे जेते कुआडे प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम ले सब कटक को प्रिफर करू कटक रे भलो डॉक्टर्स भलो डॉक्टर्स नुहंती मेन हला कोन ना कटक रे बेसी पेशेंट देखि 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 ता एक्सपीरियंस टा हो जाय थाए दैट इज द मेन गेम बुझले कि तेणु आमर जो बैंक स्टेट बैंक रे कोन से बेसी क्लाइंट्स को डील करते एक्सपोर्ट रो तेणु से एक्सपीरियंस टा भलो आउ किछि नाही तो आ रायगड़ा जेतु मते देखिया पड़ियो सर मते टिके आपण ये करिया पड़ियो टिके सर बोधे नाही सर एडा को हाईलाइट करंतु सर बेसिक जिंस तो आपण 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 गोटे कारण ये करंतु मते मेल करंतु आरबीआई रो गोटे मीटिंग बोधे 12-13 बळ अछि मु तांको से रायगड़ा कहि एटलीस्ट गोटे बैंक करंतु आपण जीएमडीआईसी कोंतु से माने हमको लिखिबे जीएमडीआईसी सो दैट कोन करेस्पोंडेंस टा ठीक रहइबो सर आरबीआई को लिखले भी आपण लिखंतु आरबीआई को लिखंतु आ मते गोटे कॉपी मार्क कर कारण आरबीआई वाला डाकी चंती गोटे मीटिंग करे पे डाकी चंती मु ए कथाटा उठेबी तमर मन रहइबनी मते देले मु लिखि तो मु लिखि दोस्त तथापि सर नमस्कार ए बाबा आसंता इडो आसंता ए आप फोटो देखुथिले बे आसंता हमर महापात्र जो फोटो देखुनथिले कहली बॉम्बे रो एक्सपोर्ट करंती बोली ते महाशय अबे बहुत दिन पर आछंती हैला जो अपन देखेली जो स्लाइड देखेली जो गदा हितला ठिया हितले हमर महापात्र संस्कृत एक्सपोर्ट्स बोली बसंत ए भद्र व्यक्ति आज आछंती हां तेणु आप मते लिखिदेले सो दैट कौन मुझे कहबी बट किंतु आप जीएमडीआईसी थ्रू रे आसंतु टिके आसले बेटर टिके ये सर नेक्स्ट सर आमे मनोज बाबू मु ताल रखु मनोज बाबू टिके जदी कहि परिबे प्री शिपमेंट कोन डॉक्यूमेंट्स लागु छी प्री शिपमेंट जदी चाहिबे जदी बारिक अछंती बारिक बने बोदे बारिक बाबू अछंती जदि नाहंती ताले दिगंबर बाबू टिके कोन हम दिगंबर दास होचंती हमर एक्सेल लॉजिस्टिक कंपनी हां दे अछंती हां सीए नमस्कार नमस्कार आपण टिके प्री शिपमेंट आ पोस्ट शिपमेंट को प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स टिके ओडिया रे बुझे दियंतु तापर हमें बंद कर तापर वाइंड अप करबा ना ना फास्ट आपनकर फाइनेंशियल जो आपण जो पिला मानु देई चंती मते मो 7-8 पिला कांटेक्ट करचंती ये करचंती मु कहले फास्ट एटा पार्ट टाइम जॉब नु एक्सपोर्ट टा पार्ट टाइम जॉब ना अन्य काम करके एठी करि परिबन तमे फास्ट डॉक्यूमेंट्स तो आपण पढे चंती मु कहि दउ कोन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मु
महुटा आपणकर ओडिसा रे ये हबो कि हनी महुटा अछि ना अवेलेबल ओडिसा रे मऊ प्लेंटी ऑफ अवेलेबल अछि मऊ। हाँ सर ताले महू अवेलेबल अछि रॉ महू बहुत अवेलेबल हाँ अछि। रम ठीक है धरचंदी रम हो जापान न तार गोटे बिग मार्केट अछि अच्छा जापान न अछि यूएस र भी अछि फास्ट हेलो हाँ डॉक्यूमेंट्स बर्तमान लागो फास्ट अछि आपनकर आईसी कोड नंबर जीएसटी हेलो बैंक आईडी सुनुचंती आगे सर सुनुछु। आपण एलसी नल परचेज ऑर्डर जे थाए से एटा होचे एक्सपोर्ट पई लागिवो आपनकर सर्टिफिकेट ओरिजिन तो हमर होचे साउथ साथ देबे सर्टिफिकेट ओरिजिन जोटा धरंतु लागिवो सेटा शिपमेंट परे किंतु शिपमेंट पई इनवॉइस पैकिंग लिस्ट परचेज ऑर्डर एलसी हले एलसी एडी कोड बैंक एडी कोड ए सब हले आपनकर एक्सपोर्ट पई हे गला अवेलेबल रेजिस्ट्रेशन हो फास्ट अछि एडी कोड रेजिस्ट्रेशन हो कस्टम्स रे जो कस्टम्स रे करियो पारादीप ना कलकत्ता करंतु बा विशाखापट्टनम करंतु किबा बॉम्बे करंतु कि दिल्ली करंतु आपन फास्ट रेजिस्ट्रेशन करिया पड़ियो ता पई गोटे मिसलेनियस 1000 ରୁ 1200 टका 1500 टका खर्च अछि। हेलो हाँ हाँ कोंतु 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 ठीक अछि ऑडिबल। अच्छा ठीक अछि आपन एटा होचे कर साला पर तापर एक्सपोर्ट करबे आ जदी फाइनेंशियली आपन को संगे संगे बैंक लोन दबनी दी तीनटा शिपमेंट कर साला पर आपन को 80% एलसी रो 80% बैंक आपन फाइनेंस करिवो कोलेटरल मॉर्गेज सेति पई नबो नै कि करिवो प्रथमे बिल्कुल फर्स्ट शिपमेंट के सेकंड शिपमेंट किछि टंका आपन बैंक दबनी जते थाउ आपन जे कोलेटरल मॉर्गेज दियंची एलसी आनी की ताहले आपनकर एलसी आनी की कोलेटरल मॉर्गेज देले तापर आपन से देई पारे 50% भरा पैसा एडवांस देई पारे। हेलो साहू सर नमस्कार एई तो सार तो एई राइस ऑर्डर नेबे बोली आसे 200 टन राइस ऑर्डर अछि। हेलो सर सुशांत बाबू सर सर हेलो सुना जाउछि सर सर हाँ कंटिन्यू करंतु सर सुना जाउछि। आमर एठी ओडिसा रु आपनकर माने बहुत जिंस हबार अछि ता भीतर मोहुटा भी बढ़िया मार्केट अछि मोहुर आपनकर टामारिन मार्केट अछि सार तो कहले टामारिन ऊपर कॉटन मार्केट बढ़िया अछि बांग्लादेश एकदम बाय रोड भी जाई पे पठेई परिबे बांग्लादेश आ राइस तो अछि किंतु राइस एठी भाइबल होनी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यार ऊपर फोकस कले आपण करि परिबे किछि आ हैंडीक्राफ्ट तो अछि हैंडीक्राफ्ट बड़ बड़ जायंट अछन करूछंती आ स्टोन कार्विंग ये सब होउची सर आपनर कांटेक्ट शेयर करि परिबे सर सार अंगठा नेले छार देई देबे किछि नै कांटेक्ट अछि मो नंबर टा खाली दे 983 हां सर 11 हां सर कोन 38316 98311 38316 कहबे आ महापात्र कहउतले कोन किछि कहबे कहला नाइ नै कहबे हां महापात्र बहुत एक्सपीरियंस हां अछि बहुत एक्सपीरियंस बहुत गुडा काम करछन बहुत करछन्ते बहुत ये करछन्ते हां बहुत किछि लॉस भी किछटा हेछि तनो हां एक्सपीरियंस लॉस भलो तांकर अछि जे डाकिया वेजिटेबल लॉस हेछि तांकर वेजिटेबल लॉस हेछि बेस्ट लॉस इतला हां हां अरे बाबा मु सुशांत मु तांकर राइस एक्सपोर्ट मु करैथिली बॉम्बे बॉम्बे तो ठक सीएच एजेंट गुडा मैं पके नाइ ना ठक फक नुया अरे बाबा
आपण किणिला बेले अछि लाभ ना आपण बिक्रीला मार्केट तो चूजी अछि से चॉइस करी नबा आपण भल दोनते आ जन पाक पळेबो से किणिला परचेज जतले आपण खर्चटा बंचे किणिला बेले राइस धर मिलियन ठर सेति बार्गेनिंग करी किणु ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करंतु तापर नै के भाईजाग पोर्ट पहुंचा तो ନାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବେଶୀ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କେତେଟା ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମାନେ ସେମାନେ ଟାଇ ଅପ୍ କରିଦେବେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହଁ ହଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଇଏ ହଉନି ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେଦିନ ବି ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ସେସନରେ ବି କହିଲେ ସାର୍ ଫ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଲଗା ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ଫ୍ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମିଲାଣି ସାର୍ ଫ୍ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା 3 ମାସ ଆଗରୁ ତାର ମାନେ 100 टाइम्स कमी गलानी वर्तमान आबिजान होची माने राइस जाउची $1100 रे 1100 रु 1400 लाइन ऊपर डिपेंड थिला केते थिला थिला $5000 $5000 थिला से भलो पैसा कमिथि सातटा कंपनी ना आपण तो जानिथिले सेतिबा मते फोन करी कहिथिले त जे सर बहुत हायर साइड रे अछि वर्तमान सब नॉर्मल रेट अछि वर्तमान जेबेलली आपनकर वर्तमान होची $1050 जाईची माने कलकत्ता आ सेटा बॉम्बे रो हेले $650 रे जाउची अच्छा अच्छा एनी क्वेश्चन अछि हां आज्ञा एनी क्वेश्चन अछि फर्दर एनी क्वेश्चन नला हमें वाइंड अप करिया हां राइस एक्सपोर्टर को प्रमोट करंतु सर राइस वर्तमान ओडिसा रे अछि राइस किछ करन एटा इजी हबो राइस कोन फ्री सेलर पई कोन आप चाहउजंती फ्री सेलर पई सेटा कोन इशू नाही ओनली पार्बल राइस हे परियो 5 कंटेनर हेले ताकर इन्वेस्टमेंट बेसी रहइबनी नॉर्मल रहइबो धरंतु 10-50 लाख भीतर आपनकर राइस एक्सपोर्ट हे परियो ठीक अछि मार्जिन 5% रहइबो आ ताथर बेसी रहि परियो नेट प्रॉफिट ठीक अछि आ एनी फर्दर क्वेश्चन सर स्मॉल कंसाइनमेंट गुडा को केमिति हमें पठाई परिबो बाहर को पेरिसेबल गुड्स गले लॉस हे पारे छोट छोट कंसाइनमेंट करिवे पार्ट राइस करिवेन ताले अन्य जिंस आइटम चॉइस करंतु धरंतु हमर एठी कंधमाळ ये मिलुची हळदी रो सेल मार्केट अछि बांग्लादेश रो खंड हळदी रो डिमांड अछि मार्केट छाड़ दियंतु सर हमर प्रोडक्ट अछि निजर हमें प्रोडक्ट छाड़ीबु छोट छोट कंसाइनमेंट गुडा का हमें केमिति बाहर को पठाई पारि को जिनसटा कोन कमोडिटीटा कोन आपनकर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट कोन कहले कॉस्मेटिक्स एसेंशियल ऑयल्स गुडा को एसेंशियल अच्छा मु तो एक्चुअली मु जे ये वैरायटी रो सब अछि छोट छोट कंसाइनमेंट आपण यार करि परिबे सेडा सीर दरकार आपण लिक्विड आइटम नो नांती 80 ml रो अधिक अलाउड करू नांती आपण एठी छोट छोट सीमेंट जहाज जाई परिबन ताल कोरियर को रिक्वेस्ट करन कोरियर जदी नै परिबो आपण जो पोस्टल अछि पोस्टल एक्सपोर्ट अछि कहले सारे जो नो नांती लिक्विड नो नांती चीज कोरियर जो चार्जेस नोची से चार्जेस वायबल होन अच्छा गवर्नमेंट जदी न नई परिबो किछ हो ना आपनकर 5 केजी 3 केजी माल जहाज हजी जीवो जत 5 जन के माल सहित पहुंची की जीवो से कोडी मिसिंग हे जीवो मिसिंग हबोनी माने से मिस होई जाय छोटा एकदम पैकेज जहाज टे इम्पॉसिबल अछि जाई परियो जे नगल के जन के तो आपनकर सॉल्यूशन कोन भलो सर एजेंट की अछि ओडिसा रे कोन पई ए लॉजिस्टिक एजेंट आमे ऑल ओवर इंडिया अछि मेजर पोर्ट रे सब मेजर पोर्ट बाय एयर बाय सी बाय रोड रेल सब जरे अछि ते ऑल ओवर वर्ल्ड पई अछंती किछ नै आपण कोन करियो आपनकर आपन संस्थार नाटा सर आम संस्था ना हला अछि हेक्टर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स आपन कांटेक्ट नंबर ता सर दियंतु मु आपन को कांटेक्ट करू छी 98311 कति गला अगेन 11 ना 98311 38316 कोन लेखिले सर नाटा आपनकर दिगंबर 98311 38316 ठीक ठीक मोना होची दिगंबर कोन सर नाटा दिगंबर दास मोना दिगंबर दास हां
एक्चुअली सर मोर कहया कथा हला कमल सर बहुत एफर्ट लगाउछन्ती जी जान लगेकरी प्रमोट करिया पई जे हाँ हाँ से किछिटा बहुत जिंस ना ना सार ना बहुत किछिटा प्रमोट जिंस करछन पिला मन कहना दे सार तो हार्डली बहुत चेष्टा करछन पिला मन को डेवलप करया पई मते 4-5 टा पिला एबे रिसेंटली देछन आगो ई मीटिंग रे सेमानु मु कहि जे पार्ट टाइम जॉब करिया को हेला आसीबन पूरा प्राण देई के लाला मु तुमको एक्सपोर्टर कर देबी एलसी अनुसार एलसी आनी के देबी काम करिवो तमर फाइनान्स छिवा दरकार फाइनान्स नथले छोटो एलसी मपा नै हां पार्शियल शिपमेंट अलाउ 2टा 3टा 4टा करी परिबी 200 टन रो ऑर्डर देली तुम आस्ते आस्ते करियो 5% मार्जिन एकदम बंधा अछि नेट एबे कोंतु सर आपन कोन कहबो चाहतली नहीं पात्र कोड पड़ले मो ना कहतले कोन पळे गेले पड़े सर कहतले केते सार मिनिमम सर आप पार्शियल शिपमेंट कले केते मिनिमम फाइनेंस पाखे रोया कोन दरकार कोन करियो चाहछन आइटम टा कोन मु तो एबे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम धरे छी आ स्पाइस हां केतीटा जिंस हैंडीक्राफ्ट रे आपन एलसीएल छोट छोट सीमेंट करिवे किछ नै तार मु तो दाम जाननी आपन कर हैंडीक्राफ्ट आइटम रे दाम तो मु जानिनी आपन छोट छोट सीमेंट करि परबे 5 कार्टून 7 कार्टून 1 सीबीएम 1.5 सीबीएम 2 सीबीएम सेटा मिक्स माल लो जीवो किछ असुविधा नै आमे कर दबा आपन जदि न नै परबे ई भुवनेश्वर हमर हैंड ओवर कर देबे से माल भाई कोरियर एठु गुटे खर्च लागिवो कोरियर नै भाई ट्रांसपोर्टेशन जीवो कलकत्ता जदि एयरपोर्ट रे गंती एयरपोर्ट रे एयर रे जीवो जदि भाई सी कोंती भाई सी रे कर दिया जीवो डोर डिलीवरी भी दे है परिबो किछ असुविधा आपन कोन से अटक नै आपन घर उठे कि नै कि आपन कर बायर्स पाखरा माल त पहुंचे दिया हबो ता पई हां जतले फॉरेन कंट्री रे जाके जते हम इंडिया सब थार चीपर जदि फॉरेन कंट्री रे धन डोर डिलीवरी ता बहुत खर्च अछि आगे धरन यूएसए रे गाड़ी भाड़ा जे हम इंडिया रे गाड़ी भाड़ा तार 5 गुण रो कम धरन एठी जोटा 6000 लागिवो टंका धरतु रुपीज रे सेटा आपनकर मिनिमम धर दियंतु जाई कि सेही डिस्टेंस रे मिनिमम 18000 कि 20000 टंका लागिवो डॉलर ने 20000 टंका इंडियन करेंसी लागिवो आमे डोर डिलीवरी कर देबा जदि आपन नुवा लोक अछंती किछ असुविधा ना न ले आपन पार्टी कहला ना ना मते एयरपोर्ट रे छाडी दियो आमे एयरपोर्ट रे छाड देबा सेमान क्लियरेंस करिक नेबे आगे डोर डिलीवरी हेले कोन आपनकर एथु नै कि टोटल एथिका कस्टम्स फॉर्मेलिटीज करा जीवो पुनी तांको डेस्टिनेशन कस्टम्स फॉर्मेलिटीज करा जीवो सेठी माल गाड़ी रो लोड करिक नै ता घरे पहुंचा जीवो एटा हला डोर डिलीवरी एक्स वा माने आपनको फैक्ट्री उठियो जंग ता घरे पहुंचबो किछि आपनको हेडेक नै आपन खाली पैसा खर्च करिवे आ गोटे कहला ना ना मते होचे एयरपोर्ट रे छाड दियो मते सी पोर्ट रे छाड हम सेठ छाड दबा से तार क्लियर करिक क्लियरेंस करिक नेबे अच्छा आगे आपण हेडेक को नियंतु नै जदि एक्चुअली बायर्स आपण हैंडीक्राफ्ट बायर्स मोपा नहांती जदि खोजिबे के कहिबी किंतु आपण को जे करिवे आपण एंड टू एंड सर्विस मु कर दे किछि चिंता नै नहीं मु पचार छी केते फाइनेंस पाखे रोया कथा ना फाइनेंस आपण बात जो साइज रो करिवे वैल्यू जहा धरन तो आपण 5टा कार्टून केते माल रहबो त कैलकुलेशन करी छोट छोट सीमेंट करियो से जो लिक्विड कहउचंती 5 केजी 3 केजी सेगुडा हेले सेटा हो बाय कोरियर रे इजी हो अच्छा आगे आपण धरन तो वॉल्यूम हला 1 सीबीएम सपोज धरन तो आपण कर 1 सीबीएम टोकियो जीवो आगे बर्तन फ्लेट अछि आपण कर $10 आगे सपोज $10 अछि किंतु यार बर्तन टोके $25 अछि सीबीएम भीतर आपण गोटे मीटर 3 माने हले गोटे सीबीएम हला ताजर जति आगे माल खर्च हो सेति गोटे सीबीएम भी आपण पठे परिबे हाफ सीबीएम भी पठे परिबे आगे अच्छा जति आपण से अति छोट कहले बोली माने छोट साइज में 5 केजी 3 केजी रे कले कोन हम ना आमे कले बहुत खर्च हो एक्सेसिव आगे आपण को जनतो कहले मोर 3 कार्टून माल अछि 15 30 45 केजी मु ता कोन आगे करी बाई एयरपोर्ट हे सेटु फेर क्लियरेंस घरे भी पहुंचे आगे आगे ठीक अछि आपण सारंग सहित जोगाजोग करी फोन नंबर नै कथा बे कर देब किछ असुविधा नै आगे आपण हां थैंक यू सर हेलो सर सर दिगंबर सर कोंतु सर मु संबलपुर कहूची सर हमर एक्सपोर्ट जगदीश चंद्र हाँ सर जगदीश चंद्र बेहेरा हां कोंतु तो
तो सर आपन को केतबेला कांटेक्ट करले ठीक हबो सर? एनी टाइम कांटेक्ट कर हमर तो व्यापार होचे रात्रि रो होचे बे हमें होचे अमेरिका खोला हुए चाइना रो 2टार बंद हे गलान चाइना तो हमर सब समय खोला जते राति 10टा पर्यंत आपन फोन करबे किछ नो प्रॉब्लम। ठीक अछि सर किछिरा जिंस आपन से तो पर्सनली डिस्कस करबार थिला हाँ सेति ठीक सर मु कॉल करबी सर। नंबर लिखिछन तो? हाँ हाँ सर मु ही पचार थिली नंबर टा। अच्छा ठीक अछि किछ नै पचारन तो जते जोता पारिबी मु आपन निश्चित हेल्प कर देब आ एनी सर टाइप ऑफ एक्सपोर्ट बेसिस हेल्प इंपोर्ट मो तो एक्सपोर्ट मो तो कहबे मु करे दे। हो ठीक, सर ठीक अछि सर ठीक है थैंक यू सर। Okay. Thank you very much. Now we coming to the end. Thank you very much. Hope this type of webinar will definitely help you to get some few information for to success in the export trade. And further any questions, you can contact. I am sitting in Raptani Bhavan Fastpur. My number is 94372 26712. My number is there. So अपन जो मान को किछि further किछि थिबो से माने दया करी कि ना अपन कांटेक्ट करिवे। Oh, thank you very much. আমি তাহলে wind up করছি তাহলে আমি। ओके सर थैंक यू Thank you sir, thank you. ठीक है ठीक है।